Audience, kindly settle down. At the G20 Summit 2023, to which India became host to, it was agreed by all that the
is a key driver and economic growth. The G20 dedicated to advanced systems that are equitable, inclusive, and equipped to meet the century. A very honorable resource persons, respected principal, fellow faculty, and everyone in attendance. It was recently observed report that training and materials from examples and case advantage of learning experience and simulation, along with an effective integration of technology with the teaching LMS, MS, and to cover any exam that commenced on 31st of July 2024. It is believed that FDPs often include updates on the latest trends and advancements in various academic fields. This ensures with you all at Guru Nanak College of Education, its week on today. We have amongst us Professor Sangeeta Chauhan ma'am, Professor Neerja Shukla ma'am, and also Professor Sharma sir, who will be joining us in a while as the resource person for the scheduled technical sessions today. Distinguished guests from our parent body DSGMC who are connected with us on our live stream, esteemed resource persons for today's technical session, honorable members of the organizing committee, respected delegates, ladies and gentlemen, it is both an honor and pleasure to welcome you all to the third day of the week-long faculty development program. This brings us to the auspicious moment of inaugurating the third day with lamp lighting. They say, light the lamp of love in your heart, the lamp of abundance in your home, the lamp of knowledge to dispel the darkness of ignorance, and the lamp of gratitude for the abundance that the divine has bestowed on us. To auspiciously move forward with the planned proceedings of the day, I would like to humbly invite our honorable resource persons, Professor Sangeeta Chauhan ma'am, Professor Neerja Shukla ma'am, along with the host for today, Principal ma'am, to light the lamp. Yes, everything. Ma'am, please. This is conservative. There is no discrimination.
It is now time to start with the felicitation ceremony. As we celebrate these remarkable accomplishments, I am reminded of a quote by Nelson Mandela. But before that, we'll have the auspicious Shabad. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਖੀਏ, ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री हरि कृष्ण की आई है, जिस दिन सब जाग जाए। श्री हरि कृष्ण की आई है, जिस दिन सब जाए। श्री हरि कृष्ण की आई है, श्री हरि कृष्ण की आई है, जिस दिन सब दुख जाए। जिस दिन सब दुख जाए, जिस दिन सब दुख जाए, जिस दिन सब दुख जाए, जिस दिन सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए, कर लौटिया बेताए। 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 सब दुख जाए, जिस दिन सब दुख जाए, जिस दिन सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण की आई है, जिस दिन सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण की आई है, जिस दिन सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए, कर लौटिया बेताए। तेग बहादुर सिमरिए, कर लौटिया बेताए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
Vaheguru, 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 Vaheguru जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। It is now time to start with today's felicitation ceremony. And as we celebrate these remarkable achievements, I am reminded of a quote by Nelson Mandela. What counts in life is not the mere fact that you have lived. It is what difference we have made to the lives of others that will determine the significance of the life we lead. Each of our honorees have made a significant difference with their efforts, reminds us that greatness is not just about personal achievement, but also about the positive impact we create for others. We would now like to present a small token of love and appreciation to our esteemed resource person of today's technical session 1, for which I would like to invite our esteemed resource person for technical session 1, Professor Sangeeta Chauhan ma'am, onto the stage, being accompanied by our principal ma'am, Dr. Jyoti Bala. Ladies and gentlemen, Professor Sangeeta Chauhan ma'am, former Dean of University School of Education, GGSIPU, is humbly requested to accept this small token of love and appreciation from Guru Nanak College of Education. This, I would also like to invite esteemed resource person of today's technical session 2, Professor Neerja Shukla ma'am. Coming up on stage is Professor Neerja Shukla ma'am, ladies and gentlemen. Ma'am is the former head department of education of groups with special needs, NCERT, former consultant cum faculty advisor, GGSIPU. Ma'am, if you can please take seat above only, ma'am Sangeeta ma'am. आप बार बार ऊपर. All right. This brings us to an official end of the inauguration ceremony of the third day of a week-long faculty development program and a call to begin the scheduled technical session for the day on our chosen theme, G20, One Earth, One Family, One Future, Achieving Through Quality Education. So, let me introduce you. I mean, of course, ma'am is not subjected to any introduction. It's just that profile, ma'am, they motivate the students all the more. I'll tell you. All right. Yes. I'll tell you who I am. अभी तक तुम्हारे पास वैसे पीपीटी है ना मेरी मैम आप प्रोग्राम यूज करेंगे तो यहाँ पे लैपटॉप रख देते हैं लैपटॉप दे दीजिए या कीबोर्ड आई हैव गिवन द पीपीटी Yes. So if you need a laptop or you just need a keyboard. anything Acha. So this works as a keyboard only. Just you have to press this button. if you give me the laptop वैसे मैं ये कागज इसलिए नहीं कर रही प्रेफर इट मगर मेरे को एक्चुअली आई डोंट नो I don't know what is this तुमने ऑन करा ठीक है काम Correct. and then this is the one which this is for the next slide
Just a make some difference. It's okay. ठीक है, कोई बात नहीं। Thank you. Good morning. First and foremost, I would like to thank the Almighty for giving me an opportunity to be here for my life and an opportunity to spend time with you all. I would also like to thank my parents, students, past, present, and future, who have made a tremendous difference in my life. Without gratitude to God, parents, and teachers, students, we cannot move ahead. I cannot also forget to thank my guide, Professor Shanika Bose, who has been an influence in my life, and Professor Neerja Shukla, also a very strong influence in my life. We're talking about G20, and as Reha very clearly said, that this education is a real driver to growing the economy into the G20 arena. Now we understand India. It is a really vast and diverse country. जब हम यहाँ से सड़क पे बाहर भी जाते हैं तो हम पहले क्या देखते हैं? हर लाल बत्ती पर कुछ छोटे छोटे बच्चे जो मांग रहे होते हैं कुछ. हम ये भी देखते हैं कि कहीं कहीं पर there are people who are asking for money, who are transgenders, who are asking for money. दूसरी तरफ हम देखते हैं मर्सिडीज, BMWs, छोटे बच्चे जो कि अभी उम्र भी नहीं हुई है फिर भी वो गाड़ी चला रहे हैं. किसी घर में खाने के लिए नहीं है, किसी में इतना एक्सेस है. तो है तो बहुत वास्ट डाइवर्स नेशन. क्यों? क्योंकि कल्चर्स भी और हैं. किसी हमारे केरला में थोड़ा बहुत not just the cultural, economic, everything will be very different from what it is in Delhi and it is in villages. India comprises villages also. Now, what is the most important thing here is that we have as a nation lot of challenges but a lot of opportunities which are there in front of us. And for both G20 and for India, this critical focus is on inclusive and sustainable economic growth. So the first thing I would like to point out is that we are talking about inclusion and about sustainable economic growth. Why? Because apart from the G20 comes in the SDGs, which says quality, SDG 4 is talking about quality education. And we cannot go without, whenever we talk about education or anything, we should talk about quality. Quality which we are able to sustain here in India and globally. Now, as I repeat, Reha said, education is a really key driver for the economic development, economic groups. Now, the education working group for G20, they said three things: lifelong learning, they said digital literacy, and addressing educational disparities.
This was what was the agenda about education for G20. Now here, when we look at India, our educational priorities are not just lifelong learning, digital literacy, and addressing educational disparities, but it is involving access, which is the first thing, quality and equity. That is the problem in India. Not globally, but in India. This is specific to India. We're looking at lifelong learning, we're looking at digital literacy, we're looking at addressing educational disparities, but our focus is on these three words. Access. हमारे गांव के इलाकों में कहाँ है access? जो ये बैठे हुए हमको मिलते हैं छोटे बच्चे जो बोलते हैं 1 रुपया दे दो आपका भला हो, नट जो डांस करके भी दिखाते हैं राजस्थान से, गरीब देशों से, how do we take that education access to them? We're talking about that. We're talking about quality. पहले वाली हमारी गुरु शिक्षा परंपरा, वो क्वालिटी जो थी क्या आज है? एनईपी ने भी, एनईपी 2020 ने कुछ मुद्दे ऐसे ही उठाए. अगर आप ध्यान से देखें तो it is not just this G20 summit, but also the SDG, which is talking about sustainability, and it is also about the NEP 2020, which also emphasized on actually 5 things: access, quality, equity, affordability, and one more. What was it? Access, affordability, and so on. These 3, 4, 5 things. I'll remember it. It's there in the slide also. So we have to think of not just access but quality and also equity. क्या सब बराबर है? नहीं. आपकी मेरी क्लासेस में 40 बच्चों की क्लास में सब एक से हैं? नहीं. घर में माता पिता के पास 3 बच्चे हैं, सब एक से हैं? नहीं. We've read about heredity and environment. वो सब सेम दिया है, परंतु इट्स नॉट अबाउट जेंडर, बट इट्स अबाउट भाई और बहन या 2 बहनें दोनों सेम नहीं है. तो बात यहाँ पर इक्विटी की नहीं है, यहाँ पर तो इक्विटी की बियॉन्ड है. मैं आज लैपटॉप दे सकती हूँ अपने बच्चे को, कंप्यूटर दे सकती हूँ. क्या माली का बच्चा के पास वो एक्सेस है? उसके पास वो क्वालिटी तब आ पाएगी जब हम उसके इक्विटी को देख लें. तो इसलिए ये जो 3 वर्ड्स हैं इंडिया की, एक्सेस, क्वालिटी और इक्विटी, ये है. अब आज हमारा जो एजुकेशन का स्टेट है उसमें आरटीई तो बोलता है ना कि आपको 14 साल तक फ्री कंपलसरी एजुकेशन, मिड डे मील्स भी देते हैं, सब कुछ है. मगर क्या इशू आ जाता है? रिटेंशन बहुत बड़ा इशू आ जाता है. मुझे याद है कि मैं एक स्कूल में गई, बीएलएड पढ़ाती थी श्यामा प्रसाद में उन दिनों में. तो मैं बच्चों को लेके किसी स्कूल में गई. वहां पर वो लेसन प्लानिंग के दौरान पे वो बच्चे ने बोला कि रीड, प्लीज रीड. उसने, टीचर ने बोला, यू वी मेक आवर लेसन प्लान्स, यू आर ऑल अवेयर ऑफ इट, रीड. वो पढ़ रहा था, फिर बोला, there was once upon a time a king and a queen and then this happened. बेटा इसका मतलब क्या है? मैंने ऐसे ही पूछ लिया. तो he said मतलब एक राजा होगा, एक तो रानी है. क्या उसने ये इंग्लिश को कॉम्प्रिहेंड करके बोला, या उसे पता है कि एक राजा है, एक रानी है, एक महल है, उसमें से ये होगा वो होगा? We looking at those things also. फिर उसका दिल नहीं लगता, घर जाता है खाने को कभी कभी, उसे पढ़ाई में मन ही नहीं है. उसकी टीचर उसका क्या, उसको रहना ही नहीं है भाई. फेल हो गया, अगर बाद में, उसके बाद में क्या करने का दिल करता है? पढ़ना नहीं है. आप देखेंगे बच्चे स्कूल जाना है, छुट्टी है कल की. This should not be there in education.
This is there in education. That is why retention is not happening. If it's not happening, that's the state. NEP 2020 is also working towards it. Many committees will be working on it, and so on and so forth. India is not Delhi. Delhi is not anything, everything. We have villages. हमारे यूनिवर्सिटी के पास में ककरोला गांव, वो भी विलेज है, वहां भी स्कूल्स हैं. मेरी सब कुछ नीरजा मैम कहाँ ट्राइबल इलाकों में जाती हैं, वहां के चैलेंजेस देखती हैं, वो सब बताएंगी. मैंने कुछ शायद उनके पोर्शंस भी ले लिए थे. तो ये विलेजेस में एक्सेस की क्या प्रॉब्लम होगी, रिटेंशन तो बाद में आएगी. उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की so many things, you will see there are lots of it. Then the other thing is the digital divide. अरे बाबा, मेरे पास कोविड के जमाने में क्या था, कोविड के जमाने में हमको ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे बच्चे ऑनलाइन. एक बच्चा एक स्कूल में, दूसरे बच्चे के लिए नहीं है दूसरा मोबाइल फोन. डिजिटल डिवाइड हमारे विलेजेस, हमारे ट्राइबल एरियाज में है ही नहीं. तो वो कहाँ से, उनके तो समय निकल गया. इकोनॉमिक इश्यूज इज द लास्ट वन, विच आई थिंक इज अ बिग थिंग. एक तरफ आपके लेबर के लॉज और ये सब बोलते हैं, बच्चे को बीड़ी की फैक्ट्री में काम करने मत दो, अगरबत्ती बनाने के लिए वो मत करो. मैं दिया बाती सुबह और शाम जरूर करती हूँ. अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है और लगता है प्रभु तेरे पास जाऊंगी, कहेंगे तुमने किया क्या, समझ ही नहीं आता. तो उस दिया बाती में अगरबत्ती कौन बना रहा है? छोटे बच्चे. उनको क्या बीमारियां हो रही है? छोटे बच्चे. मुझे तो अगरबत्ती जलानी है, क्या करें? फ्रॉम माई साइड एक फूल की आती है, जो फूलों के टेम्पल्स में से बचे हुए की अगरबत्तीज होती है, मतलब उससे बनाते हैं, तो इसमें नहीं होता. बट ये इकोनॉमिक इश्यूज में जब आ जाता है वो महंगी होती है. मगर ये बच्चे अगर काम नहीं करेंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे? अगर खाना खाएंगे, मिड डे मील के कारण स्कूल गए, तो उनका पढ़ाई में शायद दिल नहीं. क्वालिटी पे अगर हम आते हैं तो हमारे यहाँ पर देयर आर गैप्स इन द लर्निंग आउटकम्स, बहुत गैप्स. टीचर पढ़ा रही है अपना लेसन प्लान बना के, कितना कुछ अंदर जा रहा है उसके लर्निंग आउटकम्स पे. इसलिए अब फोकस है कि भैया जो भी कुछ करो आप लर्निंग आउटकम्स देखो ना, बच्चे ने क्या सीखा, एट द एंड ऑफ दिस लेसन क्या सीखा, एट द एंड ऑफ द डे क्या सीखा, उससे उसको मतलब क्या है. शायद बात फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे भी आती है. मगर जब हम गैप्स को एड्रेस करते हैं तो सबसे बड़ी बात आ जाती है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की. कौन से गांव में, ट्राइबल एरियाज में टॉयलेट्स नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, बारिश आई तो लीक कर रहा है. ऑल दीज थिंग्स, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एड्रेस करने के लिए G20 का. देन टीचर क्वालिटी, वी ऑल अंडरस्टैंड it's a teacher who makes a child what he is. Yes or no? बोर हो गए हैं तो एक बीच में कहानी सुनाओ. थोड़ी देर में ओके, सुनाऊंगी जरूर. टीचर क्वालिटी पे इतना अंतर है कि अगर वो टीचर चाहे तो बच्चों की अटेंशन को रख सकते हैं. वी टॉक अबाउट मॉड्यूलेशन, वी टॉक अबाउट एवरीथिंग, बट इफ अ चाइल्ड इज नॉट happy with about the quality of a teacher, he doesn't understand. टीचर ने बहुत अच्छा समझदार है, उसे बहुत कुछ आता है, मगर जब वो पढ़ाती है तो मुझे खुद भी याद है फिलोसफी के लेसन में 2 सेक्शंस होते थे. मैं एक सेक्शन में थी, कुछ समझ नहीं आता था, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स होते थे. अंग्रेजी तो मुझे समझ आती है मगर नहीं होता था. मैंने परमिशन लेके दूसरे सेक्शन में बैठी, एंड यू विल नॉट बिलीव इट, फिलोसफी के को मैंने जैसे समझा, कभी नहीं समझा. साइकोलॉजी की तो टीचर ही अच्छी थी, तो उनका तो समझ ही आता था. द क्वालिटी ऑफ अ टीचर मेक्स अ लॉट ऑफ अ डिफरेंस. एंड सो नॉट जस्ट
the NEP 2020, but we are all conscious of it about this. Language का address भी किया है, NEP 2020 में भी हुआ है और इसको हमें देखना भी है. Regional भाषा में there are still, I must say, it's the mother tongue which they are saying कि शुरू में पढ़ाएं. मदर टंग हमारे देश में कितनी है? मुझे पंजाबी थोड़ी थोड़ी समझ आती है, हिंदी आती है, तमिल नहीं आती है. एक टीचर यहाँ से जा रही है और नॉर्थ ईस्ट में जाती है मगर उसे इंग्लिश नहीं आती है, तो टीचर क्वालिटी भी इफेक्ट होती है. मगर लैंग्वेज से ही बच्चे को समझ आएगा कि मैंने क्या पढ़ना है क्या नहीं. बात बहुत अहम है जिसको कि देखना है, वो है टेक्स्ट बुक्स. इस पर बहुत काम करा है हमारी NCERT में, हमारी NCFSE की नीरजा मैम और इन लोगों ने बहुत टेक्स्ट बुक्स पर भी काम किया है और किस तरह से टेक्स्ट बुक्स का वो स्कूल लेवल में डालेंगे. आज भी बात कही है कि सब टेक्स्ट बुक्स को आप जितनी भी लैंग्वेजेस में डाल सकते हैं डाल दीजिएगा ताकि टेक्स्ट बुक्स आर फ्रीली अवेलेबल. पता नहीं मेरे को ये बोलना चाहिए कि नहीं, मगर कहीं कहीं पर टेक्स्ट बुक्स इतनी भारी होती हैं कि NEP 2020 also had to talk about, the school bags weight being more. Number two, the textbooks which are given by few private schools are not necessarily the ones which are there given by NCERT or SCERT or whatever CBSE curriculum. They are overcharging. Again, economy about that G20. So the textbooks are there. And it's not just from school level, but till higher education that this quality should be making a difference. Now, so then we have seen what are the educational disparities. Geographical areas, far-flung areas, gender. इक्विटी की भी बात करते हैं तो क्या लड़कियों को उतना एक्सेस हो रहा है? आज भी उबर में लेकर मैं जा रही थी यूनिवर्सिटी कल, तो उन्होंने बोला मेरे से कि मैडम खाना तो लड़की ही बनाएगी ना, और उसकी अब 19 की हो गई है, शादी करानी है. This is still the mentality with most of us today, and this is a disparity which has to be addressed. Still, am I taking too much of your topics also and your? Not at all. Okay. We talk about same issue. नहीं नीरजा मैम ऐसे बैठ, उनका पोर्शन तो नहीं ले रही कुछ. Okay, then about this gender, then comes the socio-economic standards. I began also, and initially also I talked about this socio-economic disparity. खाने के लिए है नहीं किसी को, किसी घर में Mercedes और BMW बहुत है. These socio-economic, that was economics, the other is socio angle. Sociological disparity क्या हो सकती है? Can somebody tell me? I am talking about socio-economic standards. What is the sociological disparity that can come? If people are listening, what could be the sociological, the economic disparity? दिख रही है. सोशियो इकोनॉमिक जब हम बात करते हैं तो और कोई एग्जाम्पल कोई दे पाएगा? Anybody? Try, make an attempt. बेटा. The social differences in the mind, in the social setup, differences where even in Delhi, not good beta, thank you. Not only in Delhi के थोड़ा सा एरिया उधर चले जाओ, नजफगढ़ में mental something else. You go to the Haryana belt and then you come back to the Punjab belt. You'll find a lot of it. हम तो research की thesis में भी देख लेते हैं. In the working way in which the researches are conducted. Then भैया disability.
इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। डिसेबिलिटी बोलनी नहीं है हमें, शब्द मैंने लिया है, कोई सी भी डिसेबिलिटी, मैंने ये शब्द फिर भी लिख रखा। कौन कौन सी डिसेबिलिटी कैसे ओवरकम कर रहे हैं हम? वी आर डूइंग इट, वी आर ट्राइंग टू डू फॉर इंक्लूजन एंड एवरीथिंग। मगर डिसेबिलिटी पे जब बात आती है तो कुछ कुछ मेरा मन में आता है। आप में से कितने लोगों ने नेटफ्लिक्स पे वो श्रीकांत मूवी देखी है? हाथ उठा देना, नहीं तो नहीं, ये कहानी कुछ और बताओ। उसमें ज्यादा लोगों ने नहीं। उसमें द बॉय कैन नॉट सी। हैव यू सीन इट? ओके, नाइस मूवी, सी इट। मैं पिक्चर्स नहीं देखती थी, तो ये नीरजा मैम सोच रहे होंगे कि ये जो मूवीज नहीं देखती है ये अब क्यों देखती है। श्रीकांत में वो बिल्कुल, ही वॉज टोटली ब्लाइंड एंड ही, it's a wonderful movie. If you see, he just fought kind of in a way fought with the system. He said मैं भीख नहीं मांगूंगा। अरे तुम अंधा है, तू भिखारी है। This is the mentality of most of the people here in India also, and somewhere outside also, probably still. Today we are in the 21st century. Today we are pretty modernized, that's what we feel. We have digital everything. They have brails. वो पढ़ा, उसने साइंस चाहिए था, मुझे चाहिए साइंस। The school college didn't allow. He said you have 99% but we shall not give science to you. आप कैसे करोगे experiments? And he proved it there. And he said ऐसे करोगे हम। आप बताइए, आप तो देख सकते हैं ना, आप बताइए ये प्रिंसिपल कैसे। एंड इट्स I wouldn't want to talk about it. So if you've not seen it, see the movie. Then you'll understand how we are with the word disability when we don't use it, but I'm using it purposely, how it can be removed. Not just the person has to be motivated, वो तो सब में अपना होना चाहिए इंटरनल whatever, but from the society, the mentality, हमको भी ये करना है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, MIT में तो सब दाखिला मिल रहा था श्रीकांत, हिंदुस्तान में नहीं मिल रहा था जी भाई, वह विदेश चला गया, उसको वहां पर फ्रेंड्स भी वैसे वहां के मिले। They are not bothered if he can see or not see. Then a big issue comes, marginalized communities. What are the marginalized communities? Those who belong to the underprivileged section of the society. Very good. They are underprivileged, and this is, I said in the first slide also, that has to be addressed by the G20 also says that, NEP 2020 also says it, and we say it, we feel it, we have to. If we are not looking at the marginalized community, हम कितना करते हैं? अगर हम सिर्फ रूरल बात को देखते हैं तो 70% तो रूरल एरिया में इंडिया है, मगर अगर हमें मार्जिनलाइज कम्युनिटी, वी वांट टू बी रियली इंक्लूसिव, तब वी हैव टू थिंक अबाउट देम आल्सो। एंड लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑफ कोर्स टच्ड अपॉन इट। कहीं कहीं पर तो बहुत डिफरेंस आ जाता है, अगर बात सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी की नहीं है, और क्योंकि मैं टच ना स्कूल लेवल कर रही हूँ, ना मिडिल, ना हायर, तो इसलिए मैं इसको कहती हूँ कि लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ अ डिफरेंस। कहाँ कहाँ पर, कहीं पर बिल्कुल हिंदी में बोलने का पड़ा तो हिंदी में, नहीं पर तो नहीं, तमिल में नहीं बोल पाए तो क्या। एंड देन आई थिंक आई रिमेम्बर कुछ ऐसे डिजिटल एप्स भी बनाए जहां वो मंडपम के समय में देखा था, वो जब कह रहे थे कि ये लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन अपने आप हो जाती है। तो many things, when we think about a language of instruction, a medium of instruction, we have to think about it. When I say medium of instruction, it's just about oral. When I say language of instruction, it means about how we write it. UGC also says you're allowed to write in any language, even the PhD thesis. Now, how we are aligning India's priority with G20 goals, हमने बात कर ली भी ली है,
वही चीज है, वी हैव टू एनहांस एक्सेस एंड इक्विटी फर्स्ट थिंग, टॉक अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, वो भी बात एक तरह से हुई है। Marginalized groups, we have touched on girls' education, we have touched on rural areas and disability, all of it. Now, strategies क्या है जो गवर्नमेंट ने ये सोची है? पहली स्ट्रैटेजी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करना, स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज में, और वो फैसिलिटीज देना। किस किस की बेसिक फैसिलिटीज है? बेसिक toilets, drinking water, access roads to the school. Schools should be near to where a child is staying. नहीं होता है तो इवन यहाँ पर मैंने देखा था कि हरियाणा के कहीं पर 1 टीचर स्कूल्स भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हमारी स्ट्रैटेजीज में अगर हमें अलाइन करना है G20 से और काम करना है, तो हमारे को देखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत एक्सपेंशन होनी है। जब हम दूसरी बात पे आते हैं तो बहुत स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल सपोर्ट जो कि दे भी रही है गवर्नमेंट, मगर उसका बहुत बेहतरीन तरीके से हमको सोचना है, चाहे वो प्राइवेट पार्टी से मिले, चाहे वो पब्लिक गवर्नमेंट से मिले, मगर विदाउट द फाइनेंशियल सपोर्ट होती है स्कीम्स, EWS schemes from here and some scholarships for meritorious whatever, but still. And the third then comes to community engagement. Anything which is spread about education, about anything, it comes when you involve the community, engage the community in it. It's not just the PTMs हो गया तो parents आ गए तो उन्होंने देख लिया और आगे बढ़ गए. Involve them in every development of education, involve them in everything. जब क्वालिटी पे बात करते हैं तो टीचर ट्रेनिंग में हमको बहुत 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 काम करना पड़ता है. देयर आर प्रोफेशनल CPDs, continuous professional developments which are going on and so on, but this training is being done, but it has to be emphasized. I think एक महत्वपूर्ण चीज जो थोड़ी सी सोची गई है और पायलटिंग स्टेज पर है और जो हमारे यूनिवर्सिटी में भी है, everybody must have heard of ITEP, Integrated Teacher Education Program. How many of you heard about it? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, some. Okay. So, स्कूल के बाद में जैसे हमारा BA-led होता था, उस तरह से integrated teacher. Well, in principle, it is very different actually from BA-led. We starting it from in the university this time. The piloting was last year. There were some institutions we hadn't they have got the ITEP for last year, but this year we'll be beginning with the first batch. उसमें internship, teacher training, focus थोड़ा अलग है. Pedagogy, the subjects, how they are going to be taught. क्योंकि अगर 12वीं के बाद कोई बच्चा अंग्रेजी और ज्योग्राफी करना चाह रहा है तो उसको not just in the pedagogy subjects, but he should know about the English subjects. Number 2, 8 schedule की जो languages हैं उसमें compulsorily like I'll talk about my own subject. मैं अंग्रेजी की टीचर हूँ और किस तरह के अंग्रेजी का करिकुलम ITEP में बना होगा, क्योंकि ये टीचर ट्रेनिंग की बात हो रही है. एक सब्जेक्ट वो जो पढ़ेंगे उसमें 8 शेड्यूल की इंग्लिश कोर, जिसमें क्या आता है कम्युनिकेशन, जिसमें क्या आता है अंडरस्टैंडिंग स्किल्स आ जाती हैं सारी एंड ऑल दैट. उसके अलावा अंग्रेजी अगर उसने वो तो पढ़ी और पेडागोजी भी पढ़ रहा है, साइकोलॉजी एंड एवरीथिंग अ लिटिल डिफरेंट वे में, बट उसके अलावा अंग्रेजी जब वो पढ़ रहा है तो उसको ड्रामा, पोइट्री, क्या होता है हमारे नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, ये सब भी आएंगे. उसमें भी हमने ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, उसके अलावा ट्राइबल एंड दलित, ये सब ऐड करा, हमने ऐड करा. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट माय यूनिवर्सिटी. द NCT is given a structure and I think
I don't know whether you are students who have passed out from B.Ed or whatever, but I think it's a good idea to read the 69-page document of this thing. क्या होता है NEP 2020. Read it properly once, because it really makes a difference when you go through it. If you read it, then you'll come to know many aspects of what I'm talking about. उसमें पैराग्राफ 15.5 में आईटेप का टीचर एजुकेशन का जिक्र है, जिसके बेसिस पर ये आईटेप का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन 4 ईयर प्रोग्राम की बात की गई थी। अब इससे अलग करके करिकुलम, और एक चीज छोटी सी और, जब हमारे पास पुराने पढ़े हुए बीएड के स्टूडेंट्स आते हैं, हमें कनाडा में शादी हो गई, बच्चा हो गया, कनाडा में जाके नौकरी करनी है, मैडम मेरे हस्बैंड के साथ मैंने सेटल करना है, वहां भी हमें 40 डेज टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेसन टीचिंग का प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम कहते हैं कैसे देते हैं, आपने तो पढ़ाई ही 40 लेसन थे, 45 का नहीं दे सकते। 2 साल वाले में दे सकते हैं। ITEP में there will be other things that is also at different levels, elementary, secondary includes the 10th, 11th, 12th, 9th, 10th, 11th, 12th. Curriculum development, which is being looked into, and wherever you feel you can tell me, I'll wind it off, otherwise I can go. Okay. करिकुलम डेवलपमेंट की जब बात होती है तो इस पे बहुत काम चल रहा है और चलना चाहिए। अगर वो इंक्लूड हम कर रहे हैं चीजें अपने लेसन्स में, अपने जो पढ़ रहे हैं वो टेक्स्ट बुक्स में, अगर हम उसमें लर्निंग आउटकम्स दे रहे हैं, कुछ तब्दीलियां कर रहे हैं, कहते हैं यूनिवर्सिटी में भी 3 साल के बाद में वन शुड रिवाइज द करिकुलम। इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। वी रियली वांट टू अलाइन एंड मेक आवर एजुकेशन सच अ गुड वेपन, सच अ गुड मीडियम टू ब्रिंग एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी। असेसमेंट, काफी रिफॉर्म्स हुए हैं, मगर असेसमेंट के अब भी जरूरत है। वी नो अबाउट फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट्स आल्सो, बहुत जरूरत है। 12वीं में हूँ, मेरा पेपर में इतने नंबर नहीं आए, मैंने क्लियर नहीं किया, मैं कॉलेज नहीं जा पाए। All these things have to be, what is it, a stress, a pressure we are putting on the child? ये प्रेशर ही तो हटना है। ये ले दे के सारी चीजें यहीं पर ही मिलजुल कर एक हो जाती है, जहां पर प्रेशर की बात आ जाती है। वो प्रेशर क्या है कि स्ट्रेस हो रहा है जी, मुझे ये बनना है। आजकल तो और भी स्ट्रेस है। It's not just because of the population and competition which has come about. There are so many digital tools. Forgive me if I say it, but then this year's batch, this year means the last year जो अब second year में है, I hope nobody knows nobody, but वो लोग, ma'am, may I use chat GPT? I said, damn the chat GPT, okay, but then please, heaven's sake, पहले वो गूगल बाबा जो आज भी पॉपुलर है, फिर उसके बाद में हमारा मतलब रियली यूट्यूब्स बहुत आ गई हैं, तो यूट्यूब से मैम लेक्चर देखकर हमें समझ आ गया। अरे यार मूक्स भी देख लेना, कोर्स कर ले पूरा, which is officially there 40% as per the UGC, and it's in the course curriculum of your B.Ed also. So why do we have to do it with assessment? Assessment reforms have to be made. When we are talking about lifelong learning, now this is the G20 goal also, lifelong learning and skill development. छोटी सी इसमें बात आ जाती है हमारी एडल्ट एजुकेशन में, जब हम कुछ लोग हैं जो अभी भी बिल्कुल पढ़े नहीं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात तो टीचर के साथ भी कर रहे हैं, हम बच्चे के साथ भी कर रहे हैं, अगर हमारे एडल्ट लर्नर्स हैं उनके साथ भी कर रहे हैं। क्या हम बच्चों को लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए कुछ एक्सपीरियंशियल पे भी डाल दें? और पीपल हु आर आल्सो रीडिंग, we have to make textbooks, we have to make everything so accessible, all your chat GPT also, all your Google also, that
they really feel like reading, learning, bettering themselves. I still remember, I think Neerja ma'am also never learned computers in her school or college. I had never learned. My daughter would tell me, क्या है मम्मा आपको, आप एक हाथ से क्यों करती हो? मगर हमारा विल था, वो आज सब कुछ कर लेती है दुनिया का, तुम कैसे कर, अच्छा तुम कर सकती हो, मैं तो तुमसे ज्यादा करके दिखाऊंगी। इस पॉजिटिव कंपटीशन में we have to be lifelong learners, and in this education system we have to bring in the vocational and technical, which is also the part of your NEP 2020. It is part of quality, it is part of G20, it's part of everything about sustainable development. Digital literacy, उसके लिए भी मैं अभी आगे कुछ स्लाइड्स है उसमें भी बात किया है, उसको ऑब्वियसली आज तो बहुत जरूरत है। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग में एडल्ट एजुकेशन, हाउ टू ब्रिंग इन दी एडल्ट्स टू बी लर्नर्स इन द फ्री टाइम। पॉलिसी क्या लिए इनिशिएटिव्स इंडिया ने? पहला तो ये हमारा NEP 2020 आ ही गया था, उसके जो कीवर्ड्स है मेरे ख्याल कुछ आगे की स्लाइड में है, आप देखें। सेकंड में एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये आपका NEP का है, अगर आप देखो इसे ध्यान से। एक्सेस, ये 5 शब्द हैं, इस पे ही 2020 का NEP बैठा हुआ है। और आपने G20 में भी ये एक्सेस की बात करी है, इंडियन के सिचुएशन में भी, ग्लोबल सिचुएशन में भी हमने एक्सेस की बात की है। इक्विटी की बात हर पैमाने पे हुई है। हमको, अगर हम तो सिर्फ इसमें अटक जाते हैं ना कि हमारे ओबीसीज को ये मिला ताकि हम उसको मिले नौकरी, वो सब में मैं नहीं जाती, मगर ब्रिंग अप द लैडर। इक्वालिटी एंड इक्विटी आर डिफरेंट। वो मेरे कोई डायग्राम्स नहीं बनाए मेरे पास कुछ टाइम, मतलब वो नहीं था, मगर अगर आप, एक बच्चा इतने शॉर्ट है और एक बड़ा है, उसे पेड़ में से तोड़ना है सेब, तो इक्विटी तब होगी जब वो छोटे को और एक लैडर लगा के ऊपर खड़े होने, दोनों इक्वल बैठे होंगे तो इक्विटी होगी। वो हमें बहुत जरूरत है, बहुत तरह से। क्वालिटी की बात जो कि सबने हमने की ही है। अफोर्डेबिलिटी, भैया किताबों पे भी जब मैंने बात करी थी तो देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस which philanthropic NGOs which are really working towards making textbooks which are one textbook for all subjects also. Work is started also. मगर अगर हम बात करते हैं तो अफोर्डेबल क्यों नहीं हो पा रहा है? वो फिर तब हो जाएगा क्योंकि वो सस्ती किताब होगी, 20 रुपए की। स्कूल अगर कह रहा है कि तुम्हें 5,000 की ये किताबें खरीदनी है, प्राइवेट स्कूल्स में होता है बेटा, ये तो खरीदनी है। फिर वो उसके अंदर वर्कशीट्स होती हैं, देखेंगे आप, तो वर्कशीट्स में वो काम कर रहा है। वो जब वो काम कर रहा है तो खराब हो गई है 3 महीने बाद, अब तो मेरी वर्कशीट खत्म हो गई, अब मुझे दूसरी किताब चाहिए। माँ दूसरी किताब भी इसी सेमेस्टर में मुझे दिला दो। हमारे जमाने में तो भैया, हमारे कपड़ा हमारा छोटा भाई बहन भी पहनेगा तो उसे अच्छी चीज मानी जाती है। हमारे में मट्टी का खिलौना लिया, टूटाया, लड़ाई करके बाल खींचे, टूटा, दूसरा भी खरीद के अफोर्ड कर लिया। यहाँ पर किताब तुम्हारी 12वीं में हो, अब वो छोटे को दे दो, 11वीं में नहीं दे पाते क्योंकि स्कूल कंपल्सरी करते हैं, ना 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 नई किताब खरीदो। क्या हमारे को हमारे देश में ये करना चाहिए? वो तो खैर तुम्हारे बस की मेरी बस की नहीं है, तो किसी को सोचने चाहिए, जो कि लोग कभी कभी सोचते भी नहीं है। कोई बात नहीं। अकाउंटेबिलिटी, यार मेरा तो यूनिवर्सिटी में मैंने तो अपना कुछ छोड़कर यहाँ पर किया है। मैंने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग व्हाटएवर, आई फील स्टिल अकाउंटेबल, दैट्स व्हाई आई एम टुडे हियर फॉर समथिंग आई डन। एंड अकाउंटेबिलिटी हर इंसान की होनी चाहिए। गवर्नमेंट में कई जगह पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बच्चे की, टीचर की, ऑर्गेनाइजेशन की, सब चीजों की अकाउंटेबिलिटी हमें अपने अंदर तो सोचनी चाहिए। हमारे को अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए, और NEP का फाउंडेशन भी वही है, G20 का भी, SDGs का भी, और हमारी हिंदुस्तान का भी।
उसके 5 पिलर्स के बाद जो बातें उन्होंने की हैं, ECCE आज भी छोटे बच्चे की पढ़ाई के लिए NEP 2020 जो बात कर रहा है, वो बात हमको आज भी कहते हैं क्या करें अगर हमने प्राइमरी के बच्चे को पढ़ाया, अरे यार यू गो एंड लुक अब्रॉड, look at other countries, your small child is not something कि छोटा सा बच्चा है, चुप हो जा। हम क्या करते हैं, चुप हो जा, क्वेश्चनिंग बंद। हम कहते हैं कंप्यूटर जल्दी सीख ले, मोबाइल पकड़ ले, शोर मचा रहा है, मोबाइल पकड़ ले। What are we doing? And ECCE, by emphasizing in the first part about elementary, this foundational, this stage बाल वाटिकास और उसकी बात की है, तो हम इसको बहुत सुधार हो जाएगा। न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर की बात हो रही है, जो आपके आगे यहाँ भी लगाया हुआ है, टेबल के ऊपर लिखा भी हुआ है 5+3 जो भी है। और हायर एजुकेशन में कई रिफॉर्म्स है, मल्टीडिसिप्लिनैरिटी भी आई है, और आईटेप की बात मैंने कर दी थी। हब हमारा जो माइलस्टोन था, इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ 21st सेंचुरी। इसमें समग्र शिक्षा अभियान एक अभियान चल रहा है, जिसमें कि वो बात कर रहे हैं कि इंक्लूसिव, इक्विटेबल, क्वालिटी एजुकेशन हर लेवल पे, इट्स नॉट स्कूल ओनली, इट्स कॉलेज ऑल्सो, it's at all levels. Then to make that, they are working on it, they're giving money for it, for infrastructure development. आज स्थिति ये है कि अगर डिजिटल क्लासरूम्स नहीं हो, स्मार्ट बोर्ड्स नहीं हो, अगर यहाँ पर जो आपके ज्योति मैम ने बहुत अच्छे LMS को किया हुआ है वो सब नहीं हो, प्लेस में नहीं हो, तो फिर कुछ नहीं। और दूसरी तरफ यहाँ की बात की, यहाँ की सैनिटेशन, that's also very important ना। When you come from somewhere, the child has to in the whole day go to the loo, drink water. इसकी समग्र शिक्षा अभियान ये भी देख रहा है। टीचर ट्रेनिंग की बात हो रही है, पेडागोजिकल स्किल्स की, ये भी बात, there's no need to expand on it. लर्निंग आउटकम्स का इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स और कंटिन्यूअस। अब दूसरी तरफ हमारा डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात होती है। डिजिटल नॉलेज शेयरिंग के लिए टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत रिसोर्सेज और टूल्स हैं। स्वयं एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने वेरियस सब्जेक्ट्स के स्किल डेवलपमेंट के लिए सीख लेते हैं, MOOCs and all that, and e-Pathshala, which also you all are aware that it's providing e-books, it's providing with audio, and it's providing with video. The challenges के जो future directions हैं वो हमको देखनी है, inequality, kind of repetition, and data-driven policies which will look after all the gaps and monitor the progress. ये मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, पुराना वाला मिड डे मील था, मिलता था, अगर तुम जाके मॉनिटर नहीं कर रहे हो, इतना पैसा गया, खाने में क्या है, टीचर्स को कुछ और मिल गया, बच्चों को खाने में प्रोटीन की मात्रा वो नहीं, गंदा सब स्टैंडर्ड सस्ते चावल एंड ऑल दैट। It is at the implementation stage. If things are not taken care of, and if it's not rectified, कि भाई यहाँ पर कमियां हैं उसको ठीक करो, तो फिर कोई फायदा नहीं। तो ये जो डेटा ड्रिवन पॉलिसीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई कितनी नहीं हुई उस पर हमें क्या नई स्ट्रैटेजीज बनानी है वो देखना है। टीचर क्वालिटी के लिए हमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है। रिमोट एरियाज में टीचर को गवर्नमेंट स्कूल में मिला काम, उसकी शादी भी होनी है, वो गवर्नमेंट स्कूल में गई, उसे मिला रिमोट एरिया, मुझे तो नहीं पढ़ाना, मुझे ट्रांसफर चाहिए। Why not we give some scholarships for that teacher and so on and so forth? Incentives देने चाहिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए। थोड़ा सा टीचर पे बात करके मैं 5, 6, 7 स्लाइड्स में इसको सम अप करूंगी। लेसन प्लानिंग की बात पहले भी होती थी, NEP 2020 में भी हुई है कि, और हमने पहले भी साइकोलॉजी में पढ़ी थी, हमारा सब कुछ लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए।
लर्नर सेंटर्ड की बात आपकी NEP 2020 भी कहते हैं कि ये तो 5 स्टेप्स होता है। पंचडी, जिस सीक्वेंस 5 स्टेप्स इट मीन्स, उसको कैसे हम सीक्वेंस बनाएं। पहली चीज आ जाती है अदिति। व्हाट इज अदिति? इंट्रोडक्शन। Without an introduction, nothing begins. What is the new concept the teacher is teaching in the classroom is very important. वो प्रायर नॉलेज से हम रिकैपिचुलेशन की बात करते हैं ना बेटा, तो वो अदिति में आ जाता है कि न्यू कॉन्सेप्ट, पुरानी जो तुम्हारी नॉलेज है, तुम किसी स्कूल में जा रहे हो और तुम किसी क्लास में जा रहे हो और अपना लेसन प्लान लेके जा रहे हो, परंतु तुम्हें पता ही नहीं है कि उस बच्चे का अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, तो रिकैपिचुलेशन कराते हैं ना हम, अपना कितना सीख लिया, क्या कर लिया, उसके बाद कनेक्ट करते हैं। बच्चों को क्वेश्चन करेंगे टीचर से, आपस में गैदर करेंगे इंफॉर्मेशन, एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे आइडियाज और मटेरियल से। दिस इज व्हाट अदिति is the first step. Next is both. That's very important. जब भी मैं कहती हूँ, हम कहते हैं रोड मेमोराइजेशन नहीं करो भैया, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करो ना अपनी। तुमको चाह रहे हैं हम लोग कि वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे करें? प्ले से, इंक्वायरी से, एक्सपेरिमेंट से, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में, डिस्कशन से, और पढ़ के। फिर पढ़े। तो ये सारी चीजें हमने नहीं कराई तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होएगी नहीं। आप बताओ, अब ये वाला फॉर्मूला तो मैंने याद किया था मगर मैं लगा ही नहीं पा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं मैं कैसे यूज करूँ ये फॉर्मूला। अरे बाबा, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट एंड डू इट। हमने कौन सी मूवी देखी होती होगी, कोई बहुत पहले, 3 इडियट्स या क्या था उसमें, वो जब तक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो तुम कैसे अप्लाई करके। I hope the movie was right and all because I don't remember. अभ्यास, प्रैक्टिस, उसके बिना कुछ नहीं है। मैं आज डरी पड़ी भी क्यों खड़ी हूं, क्योंकि अभ्यास ही नहीं था। स्ट्रेंथन करता है अभ्यास अंडरस्टैंडिंग को, स्किल्स को, थ्रू इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज। इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटीज नहीं, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज। मेरा भाई कैसे पढ़ाई करता था, इंटेलिजेंट सबसे हमारा एक भाई था, वो संतरे को उछालता रहता था, एक्टिविटी करता रहता था, तो उसे याद हो जाता था। मुझे तो नींद आती थी, मैं तो वैसे ही बुद्धू थी, तो मुझे समझ ही नहीं आता था। मगर इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज, अगर इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज नहीं हो तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके, एंड इधर लगा लो, कहीं कहीं जाते हैं तो वहां लगा देते हैं ना। ओके, एंड ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क क्या सिखा रहे हैं हमें? कोविड के समय में मैं बहुत कमजोर हो गई थी बेटा, बहुत पतली हो गई थी। क्या होता था, घर में बैठो, ऑनलाइन क्लास को, हस्बैंड का फेस देखो, बच्चों का देखो, डॉगीज को देखो, कुछ करो ही नहीं। मुझे क्या मिस करती थी? मेरे बच्चे, मेरी नीरजा मैम, मेरे सारे कुछ। वो ग्रुप वर्क के बगैर बच्चे क्या सीखेंगे जब इतनी बड़ी तुम्हारे सामने, उसके बगैर बेढाल हो गई थी। तो ग्रुप वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल प्रोजेक्ट्स, स्मॉल, not projects, small projects which are accomplishable at that time. And I'm not just talking about school, I'm talking about even till higher education. You take a little concept and do it, it will be all right. Now this will bring in the both the understanding, this practice and prayog, application. उसके बिना तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जो भी हमने एक्वायर करी अंडरस्टैंडिंग, उसको एवरीडे लाइफ में नहीं किया तो क्या किया, है ना। अब प्रसार, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट स्टेप होता है प्रसार, एक्सपेंशन। You have to spread the acquired information through conversation, stories, songs, reading new books together. Ab now you say, ma'am, higher education not possible like that. Okay, experiment and make it a little. But for small children, even till 9th school stage, every time you find this is most effective. I've seen at platforms where only stories have worked. I've seen at platforms where songs have done something to bring in the change. हमारी आजादी में भी
हम जो गाने देशभक्ति के गाते थे उसने काम किया था। तो ये प्रसार expansion is very necessary. Togetherness is very necessary. Read a book together. You read and then another, but whatever, playing new games. And why I'm saying all that nonsense? Because it creates 90% of the neural pathways in the brain. 90% बेटा, मैं इसको इस पे एक्सपैंड नहीं कर रही। जब हम देख रहे हैं तो फिर ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, एक्सेस टू डिजिटल लर्निंग, ये करना है। कैपेसिटी बिल्डिंग में प्लेटफॉर्म्स, ट्रेनिंग, ये सब हमने बात की है। हम अगर एंड में ये बोलना चाहते हैं, इंडिया जो भारत है हमारा, it can lead the way in demonstrating the way education can drive global growth and development. Thank you. God bless you all. स्टोरी? अच्छा, स्टोरी। तो फिर मैं एक ऐसी स्टोरी हाँ, मगर अच्छा, कैसी स्टोरी चाहिए तुम्हें? क्या समझना है इससे रिलेटेड? अच्छा चलो टेक्स्ट एक 5 मिनट्स। हाँ, सॉरी मैम। एक संत महात्मा थे, लेट्स से मोनास्ट्री में, वो मोनास्ट्री में गए क्योंकि उनको वहां पर मतलब कुछ खाना वाना खिलाया, कुछ हुआ, वो महात्मा वहां पर गए। उन्होंने वहां जाने के बाद में उनकी लाइब्रेरी के दर्शन किए, लाइब्रेरी देखी तो देयर वर सच ब्यूटीफुल गुड बुक्स। उनमें से एक इतनी अच्छी किताब थी, उसमें बहुत इंफॉर्मेशन थी। हम भी तो लाइब्रेरी में जाते हैं, कोई किताब मिल जाए ऐसी तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि यार ये मिल गई, ये तो मेरा पूरा का पूरा ये मार्गदर्शन कर देगी जिस भी सब्जेक्ट। अच्छा, तो वो जो किताब उठाई, लेफ्ट देखा, राइट देखा, वेरी अनलाइकली, मगर उसको लेके अपने बैग में डाल लिया कि किसी को नहीं पता चलेगा। बट इट वॉज एक्चुअली अ वेरी गुड बुक। जो उनके प्रिंसिपल मठ के ज्योति मैम मठ की जो होती हैं, उन्हें वो इंटेलिजेंट थी, उन्होंने ये देख लिया कि ये किताब लाइब्रेरी से मिसिंग है। लाइब्रेरियन ने नहीं देखा, देखा शायद लाइब्रेरियन ने भी देखा, मगर पता चल गया। बट व्हाट डिड ही डू? ही डिड नॉट से एनीथिंग। अब वो लेके गया, गरीबी थी संत को, भूख भी थी। फिर उसने जब उसे किताब को पढ़ लिया, उसने सोचा मैं बेचूं। तो वो बेचने के लिए किसी को दिखाया कि ये कितने में खरीदेंगे आप। अब वो इकोनॉमिक्स की भी बात हो रही है ना, गरीबी थी। तो उसने बोला $1, मतलब मैं सारी करेंसी को मिला मिला के कर रही हूँ, एक बहुत सारा रुपया। हाँ, तो उसने कहा इतना दे दोगे? कहते हैं हाँ, मैं तो इतना मांग रहा हूँ, आप इतना दोगे? हाँ, मतलब मेरे को एक बार ही चेक कर ले। तो उसने कहा ठीक है, कल आ जाना, कल आपको पैसे मिल जाएंगे। वो आदमी जिसने खरीदनी थी, वो उसी मोनास्ट्री में गया। उसने ऐसे बोला, ज्योति मैम ये किताब कितने की होगी? अब ज्योति मैम तो समझ आ गया कि ये किताब कितनी जरूरत है, और उन्हें समझ आ गया कि किसी ने लिया है। इनफैक्ट किसने लिया है नहीं शायद पता चला, और किसी ने लिया। उन्होंने कहा ये तो $2, क्योंकि मैंने डॉलर की बात करी तो 2 बना दिया। ऑलराइट, 2 यूरोस बना लो, 100 के 2000, 1000 के 2000 रुपए डबल। उसने कहा ठीक है, फिर वो चला गया। फिर उसने कहा आपको कहाँ से मिली? किसी ने दी है। ऑलराइट, जब वो वापस गया तो उसने उस किताब को कहा कि लो आपको $1 की जगह $2 मिलेंगे। तो उसने कहा $2? तुमने 1 दे रहे थे, मैं तो मान गया था, मुझे इतना नहीं चाहिए। क्यों?
कि आपने कैसे वैल्यू लगाई इस किताब की? इस किताब की मैंने वैल्यू ऐसे लगाई कि मैंने ज्योति मैम से पूछा, जो संत के गुरु के सबसे बड़े गुरु से पूछा, उनसे पूछा कितने की है, तो उन्होंने बताया। और क्या बताया आपने? और कुछ नहीं बताया, बताया किसी ने दी है। किससे? आप तो मुझे जानते कि नहीं जानते? हाँ वैसे मैं जानता हूँ, मगर वो नहीं। तो उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसने कहा कि अगर इसकी इतनी वैल्यू है और उन्हें भी पता है और उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे, here the ethics morality probably something which came in the mind of the child. उसने वो किताब उठाई और बोला मैंने नहीं बेचनी है। उसने कहा अरे अभी तो तुम बेच रहे हो और अभी आपने मेरे को वापस ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो? उसने कहा नहीं, मेरे को अब ये किताब नहीं बेचनी है। He took the book and he went up to ज्योति में, या मतलब जो मठ वहां के संत के सबसे बड़े, उसके पास गया और बोला मुझे माफ कर दो गुरुजी, ये किताब वापस रखनी है लाइब्रेरी में। उसने कहा बेटा आप रख लो अपने पास ये किताब। उसने कहा नहीं, एक्चुअली यहाँ रखेंगे तो और लोग भी पढ़ेंगे, मगर आप मुझे नहीं चाहिए। मुझे फिर मैंने सोच लिया था कि मैं नया खरीद लूंगी किताब, ये आप रख लीजिए, मैंने आपको माफ भी किया और मुझे नहीं चाहिए। मैंने मन बना लिया कि मैंने ये आपको ही देनी है, तो आप ले जाइए उस किताब को। बोला मैं किताब को ले जाऊं? नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूँ ना ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दूसरी ले आएंगे लाइब्रेरी के लिए। नहीं मुझे माफ कर दीजिए। क्या चाहिए तुम्हें? ये किताब यहीं रखिए, मुझे भी यहाँ पर शरणों में ले लीजिएगा, मैं आपसे और ज्ञान पाना चाहता हूँ। I would like to read more books. I would like to learn from here. I would want to go internalize and understand what is the meaning of human existence. फिर वो कई साल तक, अपने पूरे जीवन तक, ऑफ कोर्स आपके बैचेस को तो जाना होगा, अपनी नौकरियां देखनी होगी, मगर ये कहानी का मैंने कुछ बनाया और कुछ कुछ कर दिया। तो moral of the story, your education is important, forgiveness is important, textbooks are important, learning is important, internalizing is important, and spreading this message across is important. इससे अगर प्रसार भी किया तो दूसरे लोग भी सीखे, अपने को भी माफ किया, अपना भी सीखा, दूसरों को भी सिखाया। थैंक यू। प्रॉमिस फुलफिल। गॉड ब्लेस। Thank you so much, Professor Sangeeta Chauhan, ma'am, for such an enlightening session. To quote our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, housing one-sixth of humanity and with its immense diversity of languages, religions, customs, and beliefs, India is a microcosm of the world. Ma'am, in her session, acknowledging the same, upheld the indispensability of inclusion, access, and equity. Bringing up the most realistic examples to the dais, ma'am, you drew our attention towards how the existing challenges of digital divide compromise quality of education, including gaps in learning outcomes and teacher quality, are severely hampering the growth and progress of the Indian education system. The educational disparities, as enlisted by you, ma'am, have been noted down by us. The section on strategies, as part of your presentation, specifically had our attention. As being teachers and teacher educators, we do realize our role and responsibility towards the community. The internal updates that we get from dignitaries of your stature about curriculum updates and course designs is something that we all look forward to on platforms like these. To be a lifelong learner is someone we all have committed to be after your session today.
as you familiarized us with the government policy directives and programs it added to our comprehension. As you emphasized on Abhyas, Prayog, and Prasad, I must inform you, my worthy audience today, here, that ma'am has also, time to time, availed the use of media to spread her knowledge through several interactive radio counseling programs of Gyanvani relating to concerns and issues of teacher education programs. It is your vibrant personality, ma'am, and distinct style that left audience asking for more, and we got to hear that story as well. Thank you so much, ma'am. And if you would like to start with the second technical session, or if the audience have any question to Sangeeta Sharma, any question? Yes. She said any questions, Beta? So this brings us to an end of the technical session one, and the house always gets open for the audience if they need to ask any question. Otherwise, we'll progress to the second technical session. So now, She's telling me that she will wait for me, she will want to listen to me. Because she said I will not go. She has a meeting in the afternoon. I was pushing her away. I will listen. Thank you. So it gives us immense happiness in extending a very warm welcome to our esteemed resource person for the second technical session for the third day of our ongoing faculty development program 2024. We have Professor Neerja Shukla ma'am amongst us to further enlighten us on the ongoing theme for the day, that is promoting inclusive, equitable, relevant, and quality education. I took a brief glance profile. Let me be judged by them, my knowledge. It's all your humility that you don't let us read. Otherwise, I have a full 1.5 page of ma'am's profile, which I'm sure you're going to share with us. And in the meanwhile, I will start thinking, actually this session is the extension of the first technical session because she has introduced the topic equality education and now what makes education equality. You want to start? Yes, Screen share, screen share. Present mode डाल दे. You schedule next like 5 minutes. हाँ जी. आपको तो नाम कर दे. Present लगे. इसमें क्लिक भी नहीं हो रहा. F5 में present mode डाल देता हूँ. Present. नाम क्यों दिखेगा? Change को करना. Change. सरल नाम क्यों? हाँ, बहुत टॉल. वैसे ही बहुत टॉल.
प्रैक्टिस जाती है। अच्छा। कॉलेज ठीक है, और ये वाला है ना? हाँ जी। I can't see these people here. मुझे रखना पड़ेगा। I can't see some of the beautiful faces here because I get the response that. तो पीछे कर दीजिए, बस मैं कर दूँगी। हाँ हाँ, it's much better now. ठीक है। Friends, I was telling you that this is not an independent session now. I think your principal will permit me to say that this is the extension of the first technical session, because Professor Chauhan, with whom I have worked for 4 years in Guru Gobind Singh IP University, and we worked on various things together. We have been discussing things. I think even when she is so busy these days, and I am so free. I was with my son because of my personal operation, I will. So every Saturday, Sunday, at least for an hour, we used to exchange our notes on academic issues. So now I had made a presentation for you, keeping you in mind, what should be given to you to make you a better teacher and a resource person in other programs. But now, after listening to her, I thought I should change my presentation. You have the presentation that will be available to you. Maybe I can skip some of the slides, but still I'll share some of the experience I got while working in NCERT, which may not be available to others. That opportunity was not available to others. I started working in NCERT in 1975. Your principal also was not born at that time. None of you were born. And in 1978, this was the first time when India started thinking of education for all, in the form of education for out of school children. It was called non-formal education program. Nowadays, when we start talking about an NEP 2020 and then take it ahead. But we should look back what efforts India has put in education to make it a vibrant thing and an agent of change. नॉन फॉर्मल की जो स्कीम थी 1978 में पहली बार आई, स्कीम नहीं थी, छुटपुट जगहों पे जहां उनको लगा बच्चे बाहर हैं वहां एक उन्होंने क्लास शुरू कर दिया। उन्होंने कहा 25 बच्चे होने चाहिए, लेकिन टीचर एक ही था। उसमें 4 लोगों को एनसीईआरटी में जिम्मेदारी दी गई। तब हमारी एजुकेशन सेक्रेटरी होती मिसेस दयानंद। आई कैन सी सो मेनी girls here, young girls here. Mrs. Dayanand also was very efficient education secretary, and I'm proud of working under her guidance. तो उन्होंने कुछ जगहों पे कुछ स्टेट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किया और कहा स्टेट को कि आप बच्चे आइडेंटिफाई कीजिए। 25 बच्चे मिलने भी मुश्किल थे, क्योंकि जो बच्चे काम करने जाते थे, जो अपने माँ के साथ माँ चुप चली आती थी, तो भाई बहनों को देखते थे, छोटी लड़कियां। उस समय 5 कुछ स्टेट्स में उन्होंने ये काम शुरू किया। इसमें से 4 स्टेट्स थी जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थी। मुझे एज लेक्चरर, जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर है आज, उसकी तरह एक प्रोफेसर के साथ अटैच किया गया। देयर वाज नो डिपार्टमेंट देयर, अटैच था। 2 लोग थे, एक था हिंदी स्पीकिंग के लिए, यू मेट HL शर्मा, ही वाज लेक्चरर देयर, और वो नॉन फॉर्मल इन हिंदी स्पीकिंग एरिया देख रहे थे, मैं नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया देख रही थी। इसमें उड़ीसा था, आसाम था, 2 और स्टेट थी, कौन सी है तो भूल गए इस समय। तो उस समय नॉन फॉर्मल जो बच्चे थे वो आते ही नहीं थे स्कूल में। Parents were not willing to send their children to a school, but you can see today, आज जो बच्चे, जो parents हैं, they demand education for their child.
मैं परसों आई तो आरओ जो मेरी यहाँ ठीक करने आया, मैं 6 महीने के बाद दिल्ली आई थी, तो उसने कहा कि मेरी लड़की है एक बड़ी और एक छोटी लड़की तो 1.5 साल की है, मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ स्कूलों में, मेरी बच्ची का एडमिशन नहीं हो रहा है। तो ये वो बच्चे हैं जो आज भी हमारे स्कूल में नहीं आए। आप चौराहों पे देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे, मार्केट में देख लीजिए, खाने की दुकान है, सेक्टर 6 की राजा स्वीट हाउस है, उसके सामने बैठे रहते हैं कि खाने को कुछ दे दो। ये बच्चे वो हैं जिनको स्कूल में होना चाहिए लेकिन नहीं है, और हम उनको सपोर्ट करते हैं अगर पैसे से, तो उनकी आदत, और माफ कीजिएगा हम बता रही कि मेरा पर्सनल है एक्सपीरियंस, कि उनकी आदत खराब हो जाती है। एक बार एक बच्चे से मैंने कहा चलो तुम्हें स्कूल ले चले, तो वो भाग गई लड़की, मैंने उसका हाथ पकड़ा, वो हाथ छुड़ा के भाग गई, उसको लगा स्कूल में कहाँ हमको डाल देंगे, ये इससे पनिशमेंट फॉर, यहाँ फ्रीडम है, जब चाहो तब करो। आप देखिए सड़क पे चलिए, साइड में जहाँ रैन बसेरे बने हुए हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं। इतने एफर्ट्स एनजीओज ने किए, प्लेटफॉर्म स्कूल थे, डिफरेंट मॉडल्स थे, ऑल्टरनेटिव स्कूल था, रूसिया साहब ने मध्य प्रदेश में शुरू किया था अर्न वैल्यू लर्न, वो स्कीम थी, बहुत सारे एफर्ट्स हुए, करते 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 हम आज उस स्टेज पे पहुंचे जिसमें कि आज हमारे स्कूल में हमने इसको एजुकेशन को राइट का फॉर्म दिया बच्चे को, और वो हमारे लिए अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट के सैंक्शन उस पे हुई। तो वी आर ऑल वर्किंग फॉर एजुकेशन फॉर ऑल नाउ। आपको नॉन फॉर्मल का बता रहे थे, ये कौन बच्चे थे, कुछ डॉक्टर चौहान ने बोला जैसे कि गर्ल्स चाइल्ड है तो बाहर रहते, उसको 2 घंटे के लिए क्लास होती थी। ये क्लास कौन सी थी? मल्टी लेवल मल्टी ग्रेड एजुकेशन, 1 to 5 तक के क्लास थे, एक टीचर पढ़ाता था। इट वॉज सच अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अ टीचर टू हैंडल ऑल दोज ग्रुप्स बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी सपोर्ट। तो उसमें क्या हुआ, मॉनिटरिंग सिस्टम आया, बड़े बच्चे को, सीखे बच्चे को छोटे कर दिया गया, असाइनमेंट दे दिया गया, उनको बिठा दिया गया, एक कमरे में होता था। और एक स्टेट ऐसी थी जिसमें हम लोगों ने विजिट किया जब, तो देखा कि गाय बंधी हुई है, भूसा वहां रखा है, उसी के आधे कमरे में नॉन फॉर्मल सेंटर चल रहा है। लेकिन कुछ नहीं से कुछ अच्छा था। अगर वो शुरू नहीं होता तो आज हम इस स्टेज पे नहीं होते जहां हम सब बच्चों के एजुकेशन की बात करते हैं और इक्विवेलेंस की बात करते हैं, रेलिवेंस की बात करते हैं और इंक्लूजन की बात करते हैं। इंक्लूजन जो है हम आपको बताने चाह रहे थे कि उसमें जो बच्चे आते थे, 2-3 तरह के बच्चे, चूंकि मैंने देखे थे इसलिए बताती, यू कैन फील देयर मिजरी। एक ग्रुप था भदोही के पास, वहां पे कालीन इंडस्ट्री बहुत डेवलप है, छोटे छोटे बच्चों को जिनकी उंगलियां बहुत फ्लेक्सिबल होती है, उन बच्चों को वो लोग एम्प्लॉय करते थे और उनसे कालीन की वीविंग कराते। उससे क्या हुआ कि उनसे जो रेशे होते हैं कालीन के, एक कमरे में घर है उसमें तांत पूरा उन्होंने रखा हुआ, उसी में रहते भी हैं। उन्होंने वहां पे कालीन करवा कर बच्चे आते थे, करते थे, उनके जो रेशे होते हैं जिससे कारपेट बनाया था, वो इनहेल कर लेते थे, और इनहेल करने की वजह से उनको लंग्स की बहुत सारी प्रॉब्लम। एंड द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट वाज दैट देयर पेरेंट्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम इन द फैमिली। उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों ने वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन किया और उन बच्चों की हेल्थ की प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व की। कुछ स्टेट के बिहार में जैसे कुछ एरिया है इधर का जो लगा हुआ है यूपी के पास से, वहां बच्चे जाते थे तेंदुए की पत्ती लेने, बीड़ी इंडस्ट्री में बच्चों को किया गया, बहुत फास्ट बीड़ी बनाते थे। इधर वेस्टर्न यूपी में अगर देखा तो कांच का सामान जहाँ बनता है, कांच पिघला के बनता है, चूड़ियां वगैरह भी हम लोग पहनते हैं बड़े शौक से, उसमें बच्चे काम करते थे। तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्टैंड था, वी शुड अपलॉड, कि उन्होंने कहा ये बच्चे जो ये इन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इनको काम नहीं करने दिया, इनको पढ़ाई कराओ। और वो सब करके फिर आज हम यहाँ पहुंचे कि हम एजुकेशन फॉर ऑल की बात कर रहे हैं, 25% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं उन स्कूलों में जहाँ बच्चों को, जहाँ गवर्नमेंट ने स्कूल्स को 1 रुपए के रेट पे मुहैया कराई है जमीन। अब ये बच्चे जो हैं इसमें कौन से हैं डिसएडवांटेज बच्चे?
प्रोफेसर चौहान ने वो मेंशन किया था। इसमें EWS कैटेगरी है, वो है डिसेबल बच्चे हैं, ट्राइब के बच्चे, जैसे दिल्ली जैसे शहर में तो आपको नहीं मिले, लेकिन अंदर जाएंगे तो आपको वो मिलेंगे। यहाँ पे जब क्वालिटी की बात आती है तो किताबें बनी शुरू में वो बहुत था कि लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे एम्फेसिस था उनका, उसमें बनाया गया। अब जो किताबें बन रही हैं जो उन सेंटर्स में भी चल रही हैं जो इंटीरियर एरिया में है, नॉन फॉर्मल के नाम पे तो नहीं है, लेकिन है वो स्कूल जो कि स्टेट लेवल के पैरिटी क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं। तो एक था आया था प्रोग्राम 80s में, मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, किसी ने सुना है नाम? नहीं सुना होगा क्योंकि किताबों में भी मेंशन नहीं होता है। अब मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, जिसमें वेद प्रकाश जी जो यूजीसी के चेयरमैन हुए वो भी उस ग्रुप में शामिल थे। उन्होंने किताबें बनाई और उन्होंने कहा ये हमारी ये लेवल है और हर बच्चे को ये कॉम्पिटेंसी आनी चाहिए। उसने कहा कि मास्टरी लेवल पे ये कहा गया कि 80% कॉम्पिटेंस आनी चाहिए, या फिर कंफ्यूजन हुआ कि 80% ऑफ ईच कॉम्पिटेंसी शुड बी एक्वायर्ड बाय ईच चाइल्ड। तो वो थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन उस समय उसके पैरामीटर्स थे कि यहाँ पे ये चीजें आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की इन्होंने, फैसिलिटीज की बात की, वो स्कूल में होने चाहिए, तभी हम बच्चे को अटेंड करा सकते हैं। समहाउ चाहे पहले की पॉलिसी हो चाहे अब जो है वो है, टीचर की जिम्मेदारी बहुत है। टीचर के ऊपर पूरा ओनस होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है उसको कराना है। लेकिन हमारे लिए ये भी जरूरी है उस टीचर की जो कॉम्पिटेंसी उसको तो हम बढ़ाएं। अगर हम टीचर को कॉम्पिटेंट नहीं बनाएंगे तो वो कैसे हैंडल करेगा क्लास को? और ये खाली एक टास्क नहीं है, इसे चैलेंज। अब जो इंटीग्रेटेड उसकी बात हो रही है, आईपी यूनिवर्सिटी शुरू भी कर रही है 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स फ्रॉम दिस ईयर। ये लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं उसके लिए, सिलेबस बनाने में, करिकुलम, क्योंकि अगर सिलेबस और करिकुलम रेलिवेंट नहीं होगा क्लासरूम के लिए, आप यहाँ पे है, कल को आपको जॉब मिलता है झारखंड में और ट्राइबल एरिया में चले जाते हैं और वहाँ पे 3-4 है, बोरो है, कुरुक है, उन्होंने कहा था ट्राइबल का नाम लिया तो मुझे याद आया कि मैं एग्जाम्पल दे दूं, खड़िया है। तो ये बच्चे डिफरेंट कम्युनिटी के बच्चे एक ही क्लास में हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, मदर टंग डिफरेंट है, उनको हम कैसे पढ़ाएंगे मल्टीलिंगुअल सिचुएशन? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इनके जो इश्यूज हैं उनको अच्छी तरह समझें और उसको चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करके उसकी रेमेडी खोजें। फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। टीचर का काम है आज लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात होती है, तो वो तो बहुत जरूरी है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग नहीं होगी तो आप रिडंडेंट हो जाएंगे सिस्टम के लिए। जिन लोगों ने हम लोग को पढ़ाया था, हमें याद है, हिस्ट्री की टीचर, आई विल नॉट नेम कहाँ पे पढ़ती थी, गवर्नमेंट स्कूल था, उसमें हिस्ट्री की टीचर आती थी। वो एक किताब हम लोग को, एक लड़की को खड़ा कर देती, गर्ल्स स्कूल था, वो कहती थी पढ़ो और वो सो जाती थी। आई कांट फॉरगेट द टीचर। और उसी स्कूल में एक हिंदी की टीचर थी, वो जब आती थी तो सारी लड़कियों में होड़ लगती थी, उनको रोज कौन देगा। शी वॉज सो एक्सेप्टेबल टू द क्लास। और जब वो एक्सप्लेन करती थी कोई भी गद्य या पद, तो मैं तो स्पीड से लिखती थी। मैं 9th क्लास की बात बता रही हूँ, और उसने मुझे मेरी स्पीड बढ़ा दी लिखने की, क्योंकि उनके मुंह से निकला एक एक शब्द मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो किसी किताब में या किसी सपोर्ट बुक में नहीं मिलता था। तो यू रिमेम्बर ऑल टीचर्स, गुड एंड बैड। ये जो है, इसलिए हर टीचर की जरूरत है, मेरे जैसे लोगों की भी जरूरत है कि वो अपने चीजों को इम्प्रूव करते रहे, नहीं तो वो रिडेंडेंट हो जाएंगे। अगर रिडेंडेंट हो गए तो कोई नहीं पूछेगा। मेरे जो कंटेम्प्रेरी लोग हैं, बहुत सारे लोग आराम से घर में कह रहे हैं क्या जरूरत है रिटायरमेंट के बाद पढ़ने लिखने की, परेशान, इतने दिन हमने नौकरी कर ली। मैं तो एनसीईआरटी में ही 36 साल से ऊपर मेरी नौकरी होगी, बिसाइड्स माय यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस। तो इतनी उम्र, ज्यादा उम्र है मेरी उसकी। तो उस समय भी आज मैं पढ़ती हूँ, मैं जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज की बात एजुकेशन में देखती हूँ, तो मैं अपने बेटे से कहती थी आई वांट टू डू सम कोर्स
ऑनलाइन मिल जाए। ये लोगों से भी कहा था कि आप लोग कोई ऑर्गेनाइज करो तो मैं अटेंड करूंगी उसको एज ए ट्रेनिंग, क्योंकि दिस इज द नीड ऑफ आवर। बिना उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आप अपने को आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हमने इसमें सेशन में इंक्लूजन की बात की, इक्विवेलेंस की बात इन्होंने की, रेलेवेंस की भी बात उन्होंने की, क्वालिटी एजुकेशन का उन्होंने डिफाइन कर दिया। इंक्लूजन की एक बात और कहना चाहते हैं हम। इंक्लूजन जो है वो 1986 87 में पहली बार डिसेबिलिटी के रेफरेंस में यूज हुआ। प्रोफेसर एनके जंगीरा, ही इज नो मोर नाउ, उन्होंने डिसेबिलिटी पे काम किया था एनसीईआरटी में, उनके ग्रुप ने इंक्लूजन की बात की। इंटीग्रेशन की बात की। इंटीग्रेशन है हमारे पास एक ये कॉपी है, हमारे पास एक ये दूसरे दो एक इंडिविजुअल है, हमने दोनों को साथ रखा, ये इंटीग्रेट हो गया। लेकिन इंटीग्रेशन में हमारी दोनों की आइडेंटिटी बनी हुई है। देयर इज ए चाइल्ड एंड देयर इज ए कॉपी, तो आइडेंटिटी बनी रहती है। आज भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी स्टेट्स और इवन बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा जो 25% कैटेगरी में आया है उसको कहते हैं ये आरटीई चाइल्ड। इस माइंडसेट, आरटी चाइल्ड मीन्स जो 25% कोटे के अंदर जिसका एडमिशन हुआ है। तो पहली बार जब मैंने सुना आई गॉट द शॉक कि ये क्या है आरटी चाइल्ड। चाइल्ड इज अ चाइल्ड, वो किसी भी सेक्शन से आता हो, दैट इज इंक्लूजन एंड दैट डिफाइंस हाउ टू बी परसीव आवर चिल्ड्रन इन अ सोसाइटी एंड व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी वी वांट टू डेवलप। एक छोटा सा एग्जांपल और जो मैंने जापान में दिया था, जब मैंने स्पेशल एजुकेशन के एरिया में कंट्री को रिप्रेजेंट किया था, मैंने उस समय बहुत सारे ऋग्वेद और ये सब देखे। उसमें एक कोट जो मैंने दिया था ये था कि ऋग्वेद में कहा गया है जब सूरज निकलता है तो वो अपनी रोशनी सब पे बराबर से डालता है, सब जगह। तो जब सूरज डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है तो हम अपने घर में, हमारी सोसाइटी में बच्चों को डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हैं? एंड I'm telling you the truth, so many people who were from other countries, they asked me which book you are referring to, what is Rigved, but they had never seen, they had never heard of that. तो जो हमारी जो संस्कृति है वही नॉन डिस्क्रिमिनेशन वाली है और उसी को हम एजुकेशन से सपोर्ट कर रहे हैं। ये भारतीय ज्ञान परंपरा की बात हम आज करते हैं। अब ये छोटे छोटे उदाहरण, ये मंजूषा साउथ एक्सटेंशन में छपी थी, उन्होंने बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड कोट्स लिखे हैं। यहाँ हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में है, एक लड़की ने लखनऊ में पीएचडी किया था एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ गुरु ग्रंथ साहब, और वो थीसिस मेरे पास आई थी इवेल्युएशन के लिए। मैं इवेल्युएशन क्या करती, मैं तो उसी से सीख रही थी। मुझे लगा कितनी बातें कही हैं, टीचर को कैसा होना चाहिए, असेसमेंट कैसा होना चाहिए, क्लास में क्या किस तरह की मेथोडोलॉजी पेडागोजी यूज करनी चाहिए, कौन सारी बातें हैं। हम किसी ग्रंथ को जानते नहीं है तो हम सोचते हैं कि हर चीज जो बताई जा रही है वो नहीं है, लेकिन सब चीजें कहीं ना कहीं सिस्टम में हमारे मौजूद हैं और हमें उनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करने के लिए ये बहुत अच्छा मुद्दा है जिससे कि हम अपने को अपग्रेड कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। इसमें चेंजिंग सिनेरियो की बात की, नॉन डिजिटल नेटिव्स की बात की। हमने आपको बताया कि इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, वॉट एवर वी हैव टुडे इज द cumulative effect of all the policies we had. We had non-formal, we have IIT integrated education for disabled, then we have DPEP, district primary education program, reports are available. Then after that we had SSA, Sarv Shiksha Abhiyan, and then we had education for all, then RMSA, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, and now NEP. So many efforts have been made by the country, and if you look back, at least I can look back, so we have traveled a long way today, and whatever we are in today, whatever type of classroom we have today with different types of diversity, and our efforts to address them is the cumulative effect of that. अब नए जॉब्स की बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली
I was in Bangalore and then came to know कुछ बच्चे थे 11th में उन्होंने एक बोर्ड में काम किया, पास किया उन्होंने एग्जाम, बट वो इंटरेस्टेड थे क्रिकेट में. अब ये नहीं है कि डिवीजन क्या है आपका, आपने टॉपर किया, आपने 99%, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी स्किल्स, आपकी कॉम्पिटेंसीज विल गेट यू अ प्रॉपर जॉब जिसके लिए है. आज कोई डिवीजन की बात नहीं करते. इवन माय सन टोल्ड मी, अरे तुम्हारा समय खत्म था, तुम लोगों को परसेंटेज की जरूरत होती थी, आजकल नहीं है. बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है, बच्चा कहता है हम स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाएंगे. तो स्कूल ने कहा कि हम आपके बच्चों को सपोर्ट करेंगे. अगर वो क्रिकेट के लिए जाता है स्कूल से, उसकी अटेंडेंस शॉर्ट होती, वी विल ऑर्गेनाइज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर दैट चाइल्ड एंड हेल्प द चाइल्ड लर्न जो उसने छोड़ा है. एक व्हाट्सएप पे आया था जो कि सारे लोग मोबाइल लेके सड़क पार कर रहे, खाना खा रहे, देयर इज अ नीड फॉर हेल्पिंग हैंड. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस विच इज कमिंग अप, क्योंकि आपको सपोर्ट चाहिए. क्योंकि हम लोग सब लोग बीच बीच में भी देख लेते हैं मोबाइल में कोई अर्जेंट मैसेज तो नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं है. तो मोबाइल इज नॉट डेट्रीमेंटल, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन कोपिंग अप विद द प्रेशर ऑफ सोसाइटी. पहले हम लोग कहते थे बच्चों को मोबाइल नहीं देना है, मोबाइल नहीं देना है. कोविड के बाद, कोविड के समय क्या हुआ, उन्होंने मेंशन किया, कोविड में हमने बच्चों को मोबाइल अवेलेबल कराए. जिन बच्चों के पास नहीं थे उनको लोगों ने इंडिविजुअली, जामिया के टीचर्स की ट्रेनिंग हुई तो उन्होंने, टीचर्स ने भी कहा कि जिन बच्चों को नहीं थे हमने दिए लाके, हमारे पास जो एक्स्ट्रा मोबाइल थे या उनको लाके उनको दिया हमने. इन लोगों ने सबने हेल्प किया जिस तरह से भी कर सकते थे. तो बच्चों ने उस मोबाइल के थ्रू कम से कम व्हाट्सएप से जो मैसेज आ रहा है या जो उनको असाइनमेंट दिया जा रहा है वो सीखा. नाउ दैट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लर्निंग. अब मोबाइल जो है वो मना करने वाली चीज नहीं है, हालांकि ये है कि पढ़ते समय आपका डाइवर्जन होता है इसलिए हटा दिया जाता है, लेकिन वो एक सपोर्ट सिस्टम है जो हमारे यहाँ इमर्ज हुआ. आज कभी भी बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, एजुकेशन एक ऐसा एरिया जिसको कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं ऑनलाइन कर दो. ऑल ऑफ अस हैव बिकम एक्सपर्ट इन डूइंग ऑनलाइन थिंग्स. तो ये जो है, ये जो चीजें इवॉल्व होती जा रही है विद द नेसेसिटी, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक मौका देती है हमें अपने अपने को इम्प्रूव करने के लिए और अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए. तो यहाँ पे हम सब चीजें नहीं बताएंगे क्योंकि 12 बज रहे हैं, अगला सेशन भी है. और जैसे हमने आपसे कहा कि मैं जल्दी जल्दी आपके पास स्लाइड देती हूँ और एक दो पॉइंट इसमें से इलेबोरेट करूंगी. इसमें फुल पोटेंशियल के लास्ट पॉइंट जो है उसमें एनईपी कहा गया कि हर बच्चे का पोटेंशियल अलग है, उसके लिए आप एफर्ट करिए सो दैट दे अटेन दिस इज द डेफिनेशन प्रोवाइडेड बाय यूनेस्को. एंड इफ यू कैन सी एजुकेशनल मटेरियल, resources, scholarships and teaching force, all these are part of quality education. हमारे एक कलीग होते थे एनसीईआरटी में, एक बार हम लोग देख रहे थे कितने स्कूल विदाउट टॉयलेट्स हैं, और कई स्कूल से जहाँ लॉक रहता, टॉयलेट होते थे लेकिन लॉक रहता था, चिल्ड्रन वर नॉट परमिटेड टू यूज देम. स्पेशली विलेजेस एरिया में जहाँ स्कूल्स में टॉयलेट्स नहीं थे, वहाँ गर्ल्स स्पेशली ग्रोन अप गर्ल्स नहीं आ पाती थी क्योंकि पेरेंट्स नहीं भेजते थे उन्हें. तो वहाँ पे ऐसे समय में टॉयलेट्स हमें लगा कि एक क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने का एक डायमेंशन है. तो हमारे कलीग बोले ये क्या बात हुई, टॉयलेट से कैसे क्वालिटी एजुकेशन हुई. सो एनीथिंग विच इम्प्रूव्स एक्सेस टू स्कूल and higher enrollment, higher retention, and lower dropout rate, and good achievement, comparable achievement. All those things which contribute to these things are the different dimensions of quality. 17 social ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये हमने इसमें आपकी जानकारी की, इसमें देखिए क्वालिटी एजुकेशन इज देयर, जेंडर इक्वालिटी इज देयर, एंड देन हेल्थ issues are also there. So all these things are very important. Reduced inequality also is one of the goals, and this G20 also has mentioned some of these things. This is only for your information.
इक्विटेबल एजुकेशन और इंक्लूजन की बात की तो प्रोफेसर चौहान ने ऑलरेडी ये कह दिया था इसके बारे में। दो चीजें हम करना इसमें चाहते हैं, एक है लर्निंग हाउ टू थिंक एंड लर्निंग हाउ टू लर्न। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमें लगता है टीचर्स को इन पे स्पेशल इंटरवेंशन चाहिए, हाउ टू ट्रांसलेट देम इनटू प्रैक्टिस। अगर टीचर को हम केवल किताब देंगे तो उसको छोड़ देंगे, हर आदमी बराबर नहीं हो सकता, बिकॉज टू इंडिविजुअल्स कैन नॉट हैव द सेम सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज। तो उसमें इन दो चीजों पे अगर स्पेशल आप डेमोन्स्ट्रेशन किसी सेशन में किसी को दिला सके तो उसमें टीचर्स को फायदा होगा। बाकी चीजें मैम ने बताई हैं, सो आई स्किप देम। नेक्स्ट सेशन का टाइम रहा। इक्वलिटी के 5 डायमेंशंस हमने दिए हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस बीइंग वन ऑफ देम। It has been and engagements, these are very important. Aspirations, access, achievement, आप समझते हैं। इकोनॉमिक प्रोग्रेस जब नहीं हो सकती है जब तक कि इक्विटी हम अटेन नहीं करते हैं। 3 तरह की एक मिनिस्ट्री में एक आप देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ एक डॉक्यूमेंट है, गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। वो काफी बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसमें मैं पार्ट थी उसके डिस्कशन ग्रुप में। आई हैड माय ओन नोट्स, तो उसमें जो मैंने इंटरवेंशन किया था उसमें ये कुछ चीजें 2 स्लाइड्स हमने इससे ली हैं। हमने कहा 3 तरह के 3 लेवल पे वो होना चाहिए जो सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, उनके एजुकेशन के लिए। इंस्टीट्यूशनल है तो उन्होंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में सब जगह पक्के स्कूल नहीं चलते। मिजोरम में हम गए, वहां पे डिफरेंट टाइप के कवर किए हुए थे पीछे से, वहां पत्थर के तो आपके जैसे बनते ईंट के वैसे घर नहीं बन सकते। नागालैंड में जाइए वहां लकड़ी यूज होती है स्कूल बनाने में, तो जो क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ है ही नहीं ईट के, तो नीचे से सब चीजें जाती है ऊपर, दूध वगैरह कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ के स्कूल जो है उनके क्लाइमेट के हिसाब से होने चाहिए, ताकि अगर कभी कोई लैंडस्लाइड हो या कुछ हो तो वो घर सरवाइव कर सके। इसलिए तो इंस्टीट्यूशनल जो हम बिल्डिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, रूम्स की बात करते हैं, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द on the requirement of the state and the facilities available there. पर्सनल में बच्चे का जो इंटरवेंशन है, बच्चे को क्या चाहिए, किस तरह की चीजें हेल्प चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल है, एक किताब थी एनसीईआरटी की मैथ्स की। हमारे डायरेक्टर ऑफिस में पीएन होता था, एमटीएस कहलाते हैं जो आज, उसका बेटा पढ़ता था। उसमें था क्लास 4th में there are these many primary schools and these many secondary schools and these many higher secondary schools in Delhi. What is the total number of school? वो बच्चे को समझ ही में नहीं आया, तो वो उसको फेल कर दिया। जब दूध लेने जाते हैं वहाँ लेडीज बोलते अरे वो फेल हो गया, अरे ये बच्चा फेल हो गया। वो सो एम्बेरेस्ड बच्चे के सामने कहना कि फेल हो गया। मैंने उसके पूछा तुम किसके बच्चे हो, उसने बताया। मैंने कहा पापा से कहना तुम्हें हमारे घर भेजे। मैं उसको जब जाती थी घर शाम को 5:30 बजे, तो वो मेरे दरवाजे पे बैठा रहता था किताब लेके, वेट करता था मेरा। मैंने उसको पढ़ाया, उसके बाद देखा मैंने कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। उसकी प्रॉब्लम मैथमेटिक्स की स्किल नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम लैंग्वेज थी। उसका फादर गढ़वाली, वो शायद 8th पास था। वो माँ इलिटरेट थी, घर में डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, इंग्लिश पढ़ाने वाला कोई नहीं था। वो बच्चा, उसको समझ ही में नहीं आया कि इसमें पूछा क्या जा रहा है हमसे। जब मैंने ये रियलाइज किया कि उसकी ये प्रॉब्लम है, तो उसको मैंने कहा कि उसकी फादर से बात किया कि इसको केंद्रीय विद्यालय से हटा के, जहाँ इंग्लिश मीडियम था, हिंदी मीडियम में दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में डाला। बच्चा उसमें गया, हिंदी मीडियम में पढ़ा और आज वो अपनी टैक्सी चलाता है। ही सेल्फ इंडिपेंडेंट, पढ़ाई उसने 12th तक पूरी की। इनके डिपार्टमेंट में एक लेडी है, उसके लड़कियां 2 बार फेल हो गई। नानी बताएंगे, वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में है लोअर उसमें। एक बार सीबीएसई में फेल हो गई 10th में, एक बार एनआईएस के एग्जाम में भी फेल हो गई। इन्होंने हम मुझे पकड़ा,
अरे नीरजा मैम, इसके साथ बच्चों की लड़की 2 लड़कियां हैं, हस्बैंड कुछ कमाता नहीं है, इसकी तनख्वाह 6,000 है, इसके लिए कुछ किया जाए। तो मैंने पूछा, उसको बुलाया, बात किया। उसका हम लोगों ने मिलके एक स्कूल में एडमिशन कराया, जिसमें एनआईएस के एनआईएस का कराया था ना, उसमें कोचिंग करते हैं। और वो जो ओनर निकले, मैंने कितना खोजा वोजा उनका नंबर, मैंने पहुंच गई, वो गुजरात के निकले। तो उन्होंने कहा आपको नंबर मेरा कैसे मिला? तो मैंने कहा ये तो सीक्रेट है। ऑनेस्टली मैंने नेट से कितनी देर लगा, 2 दिन लगाए थे पूरे खोजने में। एंड दैट इज अ वंडरफुल सेंटर। शी विल, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। उसको गाइड किया कि वहां जाओ, अपनी लड़की को ले जाओ। वो लड़की के, अब वो पास हो गई। ये है विटनेस उसके लिए। जब हम फिर हम लोग दोनों, जब उसके स्कूल की फीस बहुत वहां की होती थी, तो कभी 2,000 दे दिया, कभी 1,000 दे दिया, जो हम लोग दे सकते थे। ये हम ही दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन था। उसको दे देते थे। उसको हिचक होती थी, लेकिन उसको उससे बड़ा सपोर्ट मिला। आज वो लड़की 12th के लिए तैयारी करी और कहीं काम भी कर रही। अब छोटी लड़की की प्रॉब्लम हो रही थी, वो कहती मैं सीबीएसई में ही पढ़ूंगी। तो इनको मैंने कहा, बताया खोज काज के कि ऑनलाइन आप प्राइवेट कैंडिडेट की तरह भी सीबीएसई में। सो ये दीज पीपल हैव टू बी हेल्प। आई वाज इन केजी, विजिटिंग अ केजीबीवी इन झारखंड। ब्यूटीफुल स्कूल, बच्चे लड़कियां सब रेजिडेंशियल थी वहां पे। एक लड़की मेरे पास आई, वो बोली कि मैडम, मतलब मैडम कहते थे, हम कहते तुम लोग घर में भी मैडम कहते हो? बोलो नहीं नहीं, आप तो मैडम है। तो उन्होंने कहा कि हम 12th के बाद मेडिकल में डॉक्टर बनना चाहते हैं। ये ट्राइबल बच्चे थे, वो लड़की थी और काफी दूर से आई हुई थी। तो हमने कहा क्या चाहिए? तो उसको मैंने बैठ के बताया कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है, व्हाट इज द सिस्टम। चीजें अवेलेबल है, फैसिलिटी अवेलेबल है, इन लोगों को उसके पता नहीं है, सो दे कैन नॉट यूज दैट। तो उस लड़की को बताया, बल्कि उन्होंने मेरे कलीग से कहा जिनके साथ हम गए थे वहां पे, कि मैडम को आप छोड़ जाइए यहाँ रात को, ये हमारे साथ रहेंगे, कल ले जाइएगा अपने साथ। तो उन्होंने कहा अभी इतने अंदर हम कहाँ आएंगे, कल हम दूसरी जगह जाएंगे नहीं। तो ये बच्चे, इतना प्यार है इनमें, इतना थोड़ा सा आप इतना सा करिए। हम लोग क्या तो इतना हम करते हैं तो लोगों का थैंक यू भी नहीं निकलता मुंह से, लेकिन ये है आप इतना सा करिए, इतना सारा प्यार आपको देंगे, इतना रिकॉग्निशन देंगे कि आप कहेंगे कि हम भाग्यवान हैं कि आप हमको इतना तवज्जो दे रहे हैं। तो ये इंसिडेंटल, मैं इंसिडेंट से बता रही हूँ, किताब की चीजें ये तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये एक्सपीरियंस जो हमारे साथ है, ये मेरे साथ चला जाएगा ऊपर। तो आई वांटेड टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर इट विद यू। मेजर कंसर्न्स यहाँ हमने लिखे हैं, इन्होंने किया, उसके साथ आप इनको इंटीग्रेट कर लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सर्विस, आईसीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीटी का यूज, लेकिन जैसे हम लोग गए थे मेघालय में, वहाँ स्कूलों और लाइट ही नहीं आती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कंप्यूटर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इंटीरियर एरिया में। तो उन्होंने कहा कि जब लाइट इलेक्ट्रिसिटी आती है तो हम कंप्यूटर यूज कर पाते हैं। तो ये तो सिस्टम की फॉल्ट है ना, कि वहाँ हमने विजुलाइज किया कंप्यूटर का यूज, आईसीटी का यूज, लेकिन टीचर्स भी किताब से पढ़ा पाते हैं अगर, तो हमें उसका ऑल्टरनेटिव देना चाहिए। तो आपका जनरेटर सिस्टम और ये सब सजेस्ट किया था हम लोगों ने कि उस तरह से करिए, तो मे बी यू कैन डू समथिंग। जेंडर डिस्पैरिटी तो हटा दी। एनएफई में क्या होता था कि यहाँ तो हम अगर है तो सब मिल के बैठे हैं, जो आया सीट पे बैठ गया, लेकिन वहां पे क्या होता था, इधर लड़कियां बैठेंगे, इधर लड़के बैठेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, गांव में यही था, कहते लड़कियां इधर बैठेंगे, लड़के इधर बैठेंगे। अरे भाई क्यों बैठेंगे, दोनों क्लास के बच्चे हैं, लेट देम ग्रो अप टुगेदर, एटलीस्ट दे विल बी हेल्थ, देयर विल बी हेल्दी माइंड। फिर इसको, ये जो हमारा स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, जो माइंडसेट है, उसको चेंज करने की जरूरत है। तभी तक गर्ल्स, तब देखिए अब यंग बच्चे, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग 10 या 11 साल के हुए, मैं तो मेरी मम्मी ने कहा अब तुम क्रिकेट नहीं खेलोगी लड़कों के साथ, क्योंकि छोटा शहर था, बदनामी होती। फादर बॉटनी के हेड थे कॉलेज में, तो अब एक यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे वो उस तरह का सोशल एक्सेप्टेंस नहीं थी कि लड़कियां लड़के साथ खेलें। लेकिन आज हमारे बच्चे खेलते हैं तो हम तो कुछ नहीं कहते, क्योंकि हमारा माइंड सेट चेंज हो गया। हमने कहा दे हैव टू ग्रो अप टुगेदर, सो दे अंडरस्टैंड द
रियलिटीज ऑफ लाइफ, और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जहाँ बांध के रखते हैं किसी चीज को, तो जब वो खुलता है तो वो उसको बड़ी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। क्रॉस कटिंग थीम्स, इंक्लूजन और इक्विवेलेंस, इसमें हमने दो रखे थे, ह्यूमन वैल्यूज, इंक्लूजन और यूज ऑफ आईसीटी। ये डिफरेंट जो रेलिवेंस की बात करें, इक्विवेलेंस की किसी चीज की बात करें, ये थीम ही है। और उसमें बाकी में जो सेकेंडरी में रखा था, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, बच्चों को एक एज पे आके बहुत जरूरत है, इसका भी मेंशन किया गया है 2020 में। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की बात की गई, ऊपर भी हमने लिखा, शायद ये डुप्लीकेट हो गया। और इंक्लूजन, ये क्रॉस कटिंग टीम से जब मैं आईपी में थी, तो ये जो काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक लड़का आता था, शी नोज हिम, उसने मुझसे कहा, वो इतना डिप्रेस था कि मैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर रही थी, तो वो आया, उसने एक दिन कहा कि मैम मैं इतना वो है, आई विल कमिट सुसाइड ऑन 16th January विच इज माई बर्थडे। मैं तो डर गई, मैंने कहा ये तो पहला साल है मेरा यहाँ पे, और अगर ये सचमुच में ये हो गया तो क्या होगा। तो उस समय उसको धीरे धीरे आता रहा, बात करता रहा करता रहा करता रहा, और बाद में यह हाल हो गया। वो आता था, कहता है मैडम मैं तो हॉस्टलर हूँ, आप मुझे चावल और राजमा बना के कल ला के खिलाएंगी। तो ये उसका एक, ये जो पर्सनल हो जाता है, रैपर जो इस्टेब्लिश हो जाता है टीचर का और उसका, वो बहुत हेल्प करता है, और आज वो अच्छी तरह से अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। एक ये करिकुलम सुटेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सिलेबस जब हम बात करते हैं तो सिलेबस में बात करते हैं कंटेंट की, और जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो हम पेडागोजी की बात करते हैं। इसमें माइंडसेट और स्किल्स की बात की कंटेम्प्रेरी लर्नर्स के लिए, ये किताब से नहीं लिया है मैंने कहीं से, ये मेरा किसी से डिस्कशन हुआ था, तो उसकी बेसिस पे मैंने ये बनाया है। इसलिए इसमें जो टीचर के लिए जब हम बात करते हैं, जो इन लोगों ने इम्प्लीमेंट करी हुई, कंटेंट हम कम देंगे, पेडागोजी ज्यादा देंगे। अब जो कंटेंट है वो तो कंटेंट का टीचर आईटीपी का में कवर कर ही रहा है, लेकिन जो एजुकेशन में हाउ टू ट्रांजैक्ट दैट नॉलेज इन द क्लासरूम। एक फिल्म है 2016 में आई थी, मैं मेंशन करती हूँ, मैं फिर मेंशन करूंगी, आप लोगों में से शायद आपको याद होगा, पिछली बार भी मेंशन किया था मैंने, रफ बुक। रफ बुक फिल्म है, अवार्ड मिला था इसको, मैंने अवार्ड फिल्म जो अवार्ड फंक्शन हुआ था उसमें मैंने देखी थी ये। उसमें टीचर है, बिल्कुल मीडियोकर स्टूडेंट्स है, वो जाती है टीचर, उसको क्लास दे दिया जाता है, कहता है ये बच्चे बिल्कुल बेकार है, बाकी लोग सब लोग मिलके अच्छे क्लासेस ले लेते हैं। वो उसमें आती है, उसमें वो लड़का एक सामने बैठता है, सबके हाथ में मोबाइल है, वो कहता है कि आपको हम क्यों पढ़ें, हम तो गूगल से देख के पढ़ सकते हैं, ये सब तो सब गूगल पे दिया हुआ, मैडम मेंशन गूगल। तो उनसे टीचर ने एक उसको एप्लीकेशन का पार्ट क्वेश्चन दिया, वो घर गया, मैं नाम बाकी सब नए नए थे, मुझे राम कपूर का याद है, फादर बना उसका, फादर बहुत डिस्टर्ब था वो। उसने देखा उसका लड़का रात भर स्ट्रगल करता रहा, लाइट जलती रही, बहुत ट्रबलसम लड़का था, क्लास का हर क्लास में होते हैं कुछ बच्चे। So when next day he went to the college school, the teacher asked him, "Could you solve the problem?" He said no. Then the teacher said, which is the mantra for us, Google gives you information. Teacher tells you how to implement, how to use that information for meeting challenges in your daily life. This is the difference. So there is lot of information. आजकल देखिए व्हाट्सएप वगैरह में जो है बिना फैक्ट चेकिंग किए लोग भेज देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, तो मालूम पड़ता है बाद में कि गलत है वो इंफॉर्मेशन है। तो देर इज एम्पल इंफॉर्मेशन, व्हाट टू टेक एंड व्हाट टू लीव is very important thing, and a student should be taught how to do that. A teacher should also learn how to use that relevant information, correct information for classroom transaction. Sharma? The last one is very nice. A vital skill of educator in the AI era. Artificial intelligence. You say that the ability to condense rather than elaborate. I think this point of yours also in the syllabus making,
This is a very nice. This is very important. And so everything, our thinking and our thinking and analyzing and the computation, everything has been taken over by machine. So when I did my PhD, I got my PhD awarded in 1973. So that time there was no computer, there was no this thing, nothing was there. So we used to get our thesis typed on typewriter, and if there was one mistake, they will put a white fluid on that. I still have my thesis with me, white fluid on that. And for computation, I worked on factory workers, organizational behavior. I'm a psychologist basically. फैसेट मशीन एक होती थी, उसमें एक डेटा डालते थे, टक डेटा डाले टक। आज आप देखिए इतना बढ़िया बढ़िया एग्जाम, किसी भी थीसिस को देखिए, computation analysis, everything is done by computer. So artificial intelligence has taken over human thinking. This is the crux of what she's saying also. I think the last point covers it very good. What do you say? डिजिटल नेटिव्स के लिए हमने अब जो है वो रेगुलर पहले जैसे बात होती थी वो नहीं है इन बच्चों की पढ़ाई के लिए, ये बिल्कुल डिफरेंट है इनका माइंडसेट. You have a mic, Sangeeta? No, I'm saying this first person. You asked me that, but I was fascinated by it. He's here. He's not. Again? Okay. So there, I'll quickly just show them and then wind up. Okay. And then if we have any time, extra time, then we will discuss it later on. Pedagogy, आप सबको आप मेरी ये presentation ले लीजिएगा, and when आप देखेंगे उसमें एक एक point पे जब तो आपके अपने आप ही आपको समझ में आएगा कि क्या है. Overloading नहीं करिए mind की, थक जाता है दिमाग. ये मल्टीलिंगुअल क्लासरूम की बात की एक्चुअल है, ये सदर्न स्टेट्स में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है. 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, स्टेट्स कह रही है कि हमारी स्टेट की लैंग्वेज हर बच्चे को पढ़ने, कर्नाटका ने ये निकाला. एंड देयर आर सो मेनी नॉन कन्नड़ स्पीकिंग पीपल, तमिल स्पीकिंग, मलयालम स्पीकिंग, तेलुगु स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग आर आल्सो देयर. So they don't know how schools are going to face that situation. Rajasthan has prepared books in 18 languages. They have identified different languages. For instance, SIL has reported that they have prepared textbooks in different languages. There is no dialect now. They have to be language for mother tongue education, promotion of Indian languages, and Hindi. They are all part of our priority areas. Give students a voice. Students should be participating in all these decisions. स्टूडेंट्स के लिए दिया, मैंने टीचर्स की रिक्वायरमेंट दी है, स्पेशली कंसर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है, इतनी को एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें दिया है. कोविड के समय जब था तो जहाँ पे अच्छे प्रिंसिपल थे उन्होंने बहुत डायनेमिक थिंकिंग की और वो उसमें उनका बेटर रिजल्ट रहा. कुछ लोगों ने सीखा क्योंकि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनी सच सिचुएशन. And for teacher preparation, I have given this requirement. This is another slide. Here I have written that what pedagogical intervention you will like to have when you are put in a situation where you are asked to focus on equitable and inclusive education. And then prepare a list, share it with your friends, and exchange notes, and then try to think how can you face such situation. Problem ये है कि हमारे पास इतनी ट्रेनिंग होती है. लास्ट पॉइंट विच आई वांट टू से, इतनी ट्रेनिंग होती है, इतना होता है, लेकिन टीचर से जब बात करते हैं कि आप ये मेथड क्यों नहीं यूज करते, कहते हैं करिकुलम इतना हैवी है कि हमें करिकुलम को कवर करने से ही फुर्सत नहीं मिलती, अगर हम ये करेंगे तो हमें तो बहुत टाइम चाहिए. तो इसके लिए टीचिंग मेथड को इंटीग्रेटेड किताबें, लेकिन हमारी अगर सब्जेक्ट वाइज हैं और हम कहते हैं टीचर से इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाओ, उसके लिए स्पेशल इंटरवेंस चाहिएगा. कम से कम कुछ छोटी गाइडलाइंस इंस्टीट्यूशन बना सके जो किताबें बना रहे हैं या कोई और इंस्टीट्यूशन, तो उससे टीचर्स को हेल्प मिलेगी. I'll wind up here, and there is now the session is there. MC Sharma ji must be waiting. Thank you very much for being patient and listening to me, and thank you Sangeeta for making my life much easier today. Thank you. You know one thing, 3-4 slides show lastly दिया बेटा, इनकी इतनी beautiful, just
like she said, it's integration. हम दोनों की बातें नहीं हुई मतलब उस सब में भी अगर आप देखें तो about all the things she said about curriculum, about all the things she talked about, हमने उसका हेल्प किया इनके एग्जाम्पल से, हमने हेल्प किया उसका बाकी पास ऐसे हुआ। तो ये सब इंटीग्रेट करने का स्लाइड इनका देखने में और उसमें करना, वो ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि उस समय मेरा दिल कर रहा था छोटी सी कहानी बताने, छोटी सी ये थी कि एक इंसान नदी के किनारे पे खड़ा हुआ था, अच्छा, और वो मछली निकालता, रात में स्टॉर्म आया था, तो मछलियां किनारे आ गई। अब वो किनारे जब आ गई थी तो एक एक मछली उठाकर वापस कर, तो पासावाने ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम ये मछली को वापस डाल रहे हो, क्यों, क्या होगा? तो उसने बोला it will make a difference to this one's life. Please, as a good teacher, be a good human being and make a difference to each one's life, as many students or any people who come into it. God bless you all. Thank you so much, ma'am. The blessings from our mentors is all what we seek. And thank you so much, Neerja ma'am, as you introduced your session as an extension of the first one. It taught us that we come nearest to the great when we are great in humility. So, ma'am, as you began to share some of your, when you share some anecdotes in the most descriptive style, we could actually visualize and imagine the real picture of the rural India and the true status of Indian education system. We all nodded in agreement when you mentioned about the huge responsibility that lies on a teacher's shoulders and thereby acknowledged the indispensability of continuous professional development and lifelong learning. As you shared how, while reviewing a particular thesis, you indulged yourself into reverse mentorship where you were learning from the student is extremely inspirational, ma'am. It is our pleasure to be audience to this session, which also highlighted the changing scenario of the Indian education system that showed us some light at the end of the tunnel. The philanthropic efforts that you, in fact, both of you, ma'am, have been making for anyone and everyone who comes in association with you further validates the quote that I used in my introductory speech, that what counts in life is not the mere fact that we have lived, it is what difference we have made to the lives of others that will determine the lives of others, that the significance of life we lead. And it was truly, truly a pleasure to be audience to such significant personalities of the field that we have chosen for ourselves. A huge round of applause, audience. And this is such a picturesque moment to have all of you three in the frame. So thank you so much. Ma'am, I'm going to get it framed. Each and every participant should be part of this memorable moment. अब जो लोग बात कर रहे हैं तो विशु बात नहीं करेंगे, नहीं तो बात करना रिकॉर्ड हो जाएगा. Some people were talking to each other. ये कुछ भाषा दी है, मैं तो मैं विशु Or if there's anything you want to share with the technique. Any questions, Pritam? Any interventions?
Professor M.C. Sharma sir is a renowned educationist and academician of our country who is currently serving as the project director of UNICEF project on teacher education. Sir, having a magnificent record of academic excellence, has topped an MSc, MEd, MPhil degree of Delhi University and has also completed his PhD in science education from Delhi University. Professor Sharma has served at several senior positions, namely Senior Lecturer, Reader, Professor, Head Director at Delhi University NCERT, IGNOU, for more than 40 years now. Sir was awarded TCTP Award by the UK government and served there as a specialist in educational technology, teacher education, science education, and educational media production for 6 years. Professor Sharma has published large number of research papers and research articles. Sir has also written books, booklets in various areas of education and guided large number of PhD scholars. Professor Sharma has visited more than 31 countries and was the team leader in China, UK, Mauritius, Sri Lanka, Canada, New Zealand, and Thailand for Innovation in Curriculum of Teacher Education UNESCO assignment.
Sir is a project director of UNICEF project on teacher education and is a member of NCTE, MHRD, and UGC for teacher education. In addition to all this, he is also a member of management on advisory board of various universities in India and abroad. Professor Sharma is Director of Teacher Education B.Ed program in Middle Eastern countries and Mauritius and Program Director of Postgraduate Diploma in School Leadership and Management for principals, head teachers developed in collaboration with Commonwealth Secretariat London. Sir's contribution in distance education, particularly in science and teacher education, is well appreciated in more than 52 national and international conferences where he participated as chairperson and research paper contributor and keynote speaker. So here it is a truly our pleasure, sir, to have you amongst us and be an audience to your technical session, which is scheduled now. So the dais is all yours. Can I take leave, please? Thank you. क्या हाल है भाई, ठीक हो? ये बता दो इसको बस, चश्मा नहीं लगाया ना, मैं करता हूँ। आगे बढ़ाना, पीछे बढ़ाना। Just have to press this for forward and this for back. And this for back. यहाँ पर फॉरवर्ड हो रहा है। This for forward. And backward is this one? Yes. Fine. This one okay? Very ठीक। ठीक है, ठीक। Now it's a good afternoon. It's a very important time. When I was a student teacher like you. So what was the important aspect? Our teacher told us that if you want to prove to be a good teacher, your period must be arranged before the lunch and before the when last period is there. Okay, last and before lunch period. So you say lunch period. So you must be feeling very bored also. But I will be very happy if you concentrate little more. Why? Because I have tried to reshape my presentation according to you. Global concern is very important. Quality education is very important. But how relevant this presentation with you as a teacher educator. So I talk about the education. I will talk about the education technology, the conceptual aspect. Friends, I have been to various countries also. People talk about the information technology, ICT. Latest is the ICT. But what is the origin of ICT? So I will tell you the conceptual aspect of education technology and how the education technology evolved. And now we have to the latest one, the recent trends in education technology. So what I am going to tell you, the background of the education technology, what is relevant to you also. And after that, how we can come to the latest development as far as the education technology is concerned. When I talk about the education technology, if I put a simple question, what is education technology? I can tell you that very few people will able to tell us the right type of answer because very simple. Two terms are there, education technology. What is education technology? Technology which help us in improving our education. So to bring quality teaching learning in education, to improve teacher learning process is the technology. Education means the teaching learning process. So what is education technology? Is basically a knowledge. Knowledge of science and psychology is not simply knowledge, applied knowledge. So what is more important here, if you can see, the application of applied knowledge of science and psychology.
Friends, very important. Science has contributed a lot. All your equipments, the latest thing which are coming all the time is a contribution of science, obviously, technology. But technology is a very important thing, is applied aspect of the science. Therefore, what is more important, applied knowledge of science, that is technology, and psychology is very important because all the time we talk about the psychology of teaching and learning. Both are very important. And I will tell you that we are moving in advance as far as advanced movement is considered. We are going ahead as far as technology is concerned. But as far as real soft aspect is concerned, the teaching learning process, we are lagging behind. Therefore, what is education technology? Very simple application of applied knowledge of science and technology. What is the purpose of this? The purpose is to bring improvement in teaching learning process. That was the very important purpose from the very beginning. And there are two aspects of technology, as the word indicates, is a applied knowledge of science and technology. The applied knowledge of science comes in terms of technology in education. And another, which is a contribution of psychology of learning, technology of education. Suppose you have a very nice, for example, I have phone, very latest phone, maybe uh, any latest development of phone is there. The only equipment is there. So what is there? It is a hardware. If your real contribution, my lecture is not there in the phone, then it's simply a hardware. But if input in terms of my lecture is there, then it becomes a software. So software is the contribution of the teaching learning process. We deal with the improvement of teaching learning process, and the technology in education is a contribution of technology, all the hardware, equipment, etc. And the technology of education comes from our teacher education point of view, is basically is a what we call as a writing a nice lesson plan, scripting, etc. is a part of technology of education. Now, after that, the important thing comes how the education technology evolves. Friends, I tell you, education technology has three phases. First phase, sometimes we say old is gold also. We cannot neglect the first phase, although there was a need of the second phase and third phase also. But all these phases are dependent on the first phase. The first phase, as you can see here, and you already practiced during your B.Ed also, audiovisual phase, the teaching aid is basically teaching learning aid. I have seen when I sometimes, actually I don't go, but sometimes the IP University asks me, please go for evaluation examination also. I generally visit the College of Education. My purpose is not giving bad marks to the student. Marks are given at the highest level because the internal assessment matter. We discuss with the internal faculty because we believe in continuous comprehensive assessment. Personally, I believe in that. But what is more important, I generally go for having a teaching learning interaction with the student. I've seen teach, the word is teaching learning aids, and everybody is using the teaching aid as chart model everywhere. When any examination there, I can observe today's examination of B.Ed because at the road also they will a rolling board, they will a chart, they will a model, and trying to get into the rickshaw and scooter and all these things. So I can say now today's exam. My question generally is why we need an aid. For example, madam is using, one of you are using a specs. It's needed for that because to facilitate the visual aspect. But if I don't need specs and I use a specs, what will happen? I will spoil my original eyesight also. It's not needed. So I generally put a question to the student, why do we need a aid? It's not all the time compulsory when you are teaching mathematics. And the best teaching aid, I tell you, now the colored boards are there, blackboard. I will tell you the details of that. It's a very important part of teaching education technology because here how to sequence the content, where to put the content. I've seen so many people, they use a chart but they don't know how to prepare the chart. And why do you use it? So please put a question to yourself, do I need a aid? Do I need a chart or a model or any other aid? For example, when you are going for a lecture on experiential learning, no need of it. So
the question comes is just to facilitate you. At earlier time, phase 1, actually the teaching aid, what we call the audiovisual phase, was not there at all during Gurukul. Why? Education technology was also there. It was from the very beginning. When education began, education technology start coming to existence. But what type of education technology was there? That education technology was face-to-face interaction between Guru and Shish. Face-to-face interaction. They used to have a facial expression, and I can tell you, I'm talking to you, okay, but you are not putting any question, but I am also getting feedback to you to ensuring face-to-face interaction, because some of you are nodding. So that's a different thing. You must be thinking something else, but your nodding give me information that you are really very attentive. So to make the education process very interesting, so interaction is very important. So earlier, there was a direct interaction, face-to-face interaction. There was an interaction between student and the community. Student used to go there. So there was no need of audiovisual aids like chart model, etc. But as the complication arises, complication means when classroom start crowding 40 student, 30 student, and every student has individual differences, cultural differences, IQ is different, educational aspirations are different. For that, we have to meet their different learning styles, the different type of individual differences. Here comes the learning aid. Aid means to help you to get everything, because teacher is alone one, but he has to meet the needs of everybody. So how can be possible? Somebody very easily while seeing something can learn better by hearing something, can learn by doing something. For that, the teaching learning aids came into existence. So it was the various type of phase 1 was the audiovisual aid in education technology. It's very important because when I come to the advanced stage also, still in advanced stage, what is there? We can disseminate so many things. But when we want to disseminate our idea, we want to disseminate any very good aspect of any content. So for that, we need a teaching learning aid that can be part of that. So friends, it's very important for you as far as the quality is concerned. So these are the different type of teaching aid was used. Still we are using it. But now the question comes, which I want to share with you. Whenever you use any teaching aid, please try to put question to yourself, why should I use a teaching aid or teaching learning aid? Question is important because it attracts attention. I'm talking to you, but if I'm using this PowerPoint, it's a PowerPoint because I'm not giving much more information, only points are there. So that's a PowerPoint. So here, what is there? Importance, it attracts attention because all the time you can feel bored looking at my face all the time. But when you just see this, it's very little bit diverting your attention, catching your ideas also, attract attention, reduce verbalism. I can have my, or I will tell you further, some of the things which I can present pictures, we will, I can take out maximum 15 minutes. When I talk about that, I need 1 hour. So verbalism can also reduce, save time, clarify concept also because it means individual differences, and monotony is also broken. Friends, that's the important thing whenever we use any teaching aid. It's an important part of education technology. Put question, why do I use? We see the importance of the teaching aid. For example, you are writing on a blackboard. I just tell you, when I was a lecturer in Delhi University, very young like you at that time, so I was the supervisor. When you teach in a classroom situation, BA level practice teaching, supervisor is there. So one teacher was teaching about the parts of a flower. I tell you the importance of the teaching learning aid. Do we need or do we not need? So she was teaching it, and she was a South Indian lady. She brought a flower, very nice flower, rose flower. She brought it or put it there at the end. अपने बालों में रखा हुआ था flower. And she also prepared a chart and was explaining flower color is this, rosy color, all these things. Student put a question to the madam. The chart which you are talking about, the rosy color is not a rosy color. It was a red color. Second, it's a very good fragrance. I can't see any fragrance through your chart. Then you have to see that. It's a very nice chart. Then when third student got up and requested, madam, why did you use your flower which you have put at the end? अपना जो सिर में रखा है ये बता दीजिए. So why, when original thing is there, why do we need a teaching aid?
So now the question comes, when we need aid, we see the importance, whether you are a mathematics teacher, very logically developed in a blackboard, any sum you are carrying out, why do you need a chart? No question of having a model also. Every teaching aid has a purpose. When that purpose is solved, then we should make it. So first is important. And second, friends, which I would like to share with you, principle of selection of teaching aid. Whenever you want to select teaching aid, it's a very important part of education technology. It must be relevant. As I give a simple example, original flower is there. Why do you have a chart? So whether it's relevant or not, according to the nature of the topic, it must motivate the student. That's very important. Inexpensive. I just tell you that one of the, now he's the head of the department IIT Delhi. He was a lecturer, and I also was a lecturer, joined NCERT. We got a project from UNESCO at that time, low cost teaching aid पे हमें project मिला. तो we were visiting all the part of the India. भोपाल के पास हम गए तो वहाँ देखा हमने एक मैच स्टिक्स की फैक्ट्री होती है ना, माचिस की फैक्ट्री. वहाँ पे बहुत सारी माचिस के विदाउट मसाला तिल्लियाँ पड़ी हुई थी, स्टिक्स. So with that stick, that engineer, he was a lecturer at that time, prepared more than 1,000 teaching aids. और उसका हमने एक वीडियो भी बनाया, अभी तक अवेलेबल है. अगर when you go to NCERT और वहाँ जो आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स टीचर्स, they can see, हमने लिखा magic of matchsticks. We prepare more than 2,000 teaching learning aids with that, and all the concepts were clarified. So it was not expensive at all because easy to use it. It should be inexpensive, easy to prepare, easy to use it, and you can carry out. It's not be troublesome also to carry all the time. These are the important thing. Principle of selection, important. And the third important thing which I would like to share with you is the how to use it. Because when we talk about the quality, every phase of the education technology is important. How to use to make the quality, may contribute to quality education. It should involve student active participation, properly displayed, properly rehearsed, and evaluated at a regular interval of time. Friends, just I want to give background. Although you must be well familiar with all these things, but this will really add to you because it will be very useful in the latest development of education technology phase 3. So phase 1, I will restrict here that it was only to help the large classroom size when number of students were 30, 40. That was the phase 1 with charts, model, etc., slide, transparency. Other things I can skip, and now comes to the second phase. The second phase of education technology came with another type of problem. What was the problem? That the knowledge increased like anything. I tell you, when I come in here, because I am a regular reader of one of the magazine of USA. So there was a magazine in USA, and that USA magazine mentioned, last month I am giving example, that in 1 hour, can you imagine how many times knowledge is being multiplied within an hour? According to that magazine, 2.5 times within 1 hour. And can we cope up our student with all these things? So many knowledge can be provided in a short time, which we use the term, although it's not a very exact word, is the knowledge, information. A lot of information is there in terms of the knowledge. Can we provide? To provide maximum information, knowledge in a short time, then comes again a problem to the education. To solve this problem, the second phase of education technology was the information technology, means to provide maximum knowledge information in short time. You can have a lot of information. So this then comes the audio program, video program, compact disc, all these things comes, computer assisted learning, all comes because we can have a storage of knowledge, large amount of knowledge. I can tell you sometimes we have more than, I prepared more than 500 audio cassettes on each and every topic of the B.Ed program when I was director in IGNO, because we have a B.Ed program. The B.Ed program is offered in 51 countries, not limited only to India, in 51 countries. So audio cassettes are there. So my one lecture, which I will be delivering in 1 hour, can be within 15 minutes also. The audio recording can squeeze the time also. Therefore, to provide maximum information in short time effectively, that was the audio program, second phase, information technology of education technology.
Second phase was the information technology. Phase 2 of the education technology, which include audio program, video program, compact disc. Friends, what is more important? We are familiar with all these things, but how can we contribute in the development of these phases so that it add to the quality education? I've seen so many audio programs, but they are not contributing to quality at all. In some of the students may prefer listening to a song, fine, but the education lecture may not be attended by the student. Why? Because we are not trying to make it more attractive, to make it more, to make the student more motivated to listen it. So I will tell you how to go ahead with the preparation of audio program, video program, and the computer assisted learning. What is more important here is the audio program. When we talk about this, just give a glimpse why do we need all these things. That here, why do we need audio program? We must know the importance and their certain characteristic. On that basis, audio programs are to be developed. What is more important for us, the software aspect, the script, because the technician will develop it. That's the hardware aspect of education technology. And I tell you, the hardware aspect has moved forward like anything, but we are lagging behind. Software aspect is lagging behind. So whenever you use any audio program, when you write a script for any audio program, you please keep these points. Whether my audio program is bringing outside experience within the class. For example, you are a teacher at the secondary middle level. You are talking about the Taj Mahal, and you say Taj Mahal ki kya chata hai, wo hai. But if you just have a really ecosystem to be involved and put in a audio program, and all the birds' voices are there, people are going there, not the visuals, only their audio input. Because we have seen when we talk about the freedom movement, when the real audio program was shown, was rather displayed, then students were very interesting and attractive also. To bring outside experiences, draw attention, arouse curiosity, involve learner. These are very, very important aspect of audio program. And maximum thing is it can bring a lot of information in a short time. We come to the video program. Video program is better than the audio program. Why? Because we can learn maximum when more senses are involved. For example, if you're listening something, but visuals are also there. Sometimes what happens, visuals communicate a lot. So we have another video also because they combine sound and visual. I was young one after passing, as our time was the high secondary. So we went to see a English movie. It's very difficult to understand English movie because their accent is different. But we could understand very well only through the facial expression. Visuals were there. Sometimes the visuals communicate the maximum as far as audio problem is there. So the combined sound and visuals are there. It really help us to become more attractive. More involvement is there, or especially video program is very good, especially when we want to develop certain skills. Friends, I tell you, through video conferencing, video is there. Now, one of the very learned doctor in AIMS helped the doctor in USA to carry out the operation successfully. Skills can be developed through video program. The skill development is very, very important, and that's another aspect of education technology. For quality, when you are interested to develop a skill, video program must be there. So these are the important things through video program: permanent learning, development, learning involvement, and individualized learning. Now, again, we come to the computer also. Now, look at this. Audio, one sense was there, but still attractive. Audio talks are still there, but visual are very important. Video program now you can see. Now, to make it more important, individualized one, independent learning, now we have the computer assisted learning also. A teacher are not much uh, needed. Not much. Teachers are needed all the time, but not much needed. So it is independent, interactive learning is there through computer assisted learning. Great interest. And what is more important, because it's a part of information technology. So what is there in this? That the important thing is large amount of information can be stored and retrieved also. That's very, very important thing that we can see in a computer.
You need not to bother. Now I am coming to the latest phase. Up till now, I talk about the teaching learning audiovisual phase because classroom size was there. Second important phase, lot of information to be provided in short time, the information technology. Now the third comes, still after these two phases, the problem of our education was solved. Why, friends, I tell you, when now the learning is more important than teaching. How can you ensure that your teaching is the best? Only in terms of the learning. If I am talking to you, you have not learned what I am all the time sharing my ideas, it's not a good teaching. So teaching depends upon the quality of the learning. So what I try to mention, I make learning effective so that the teaching will automatically become effective. There is a maximum interaction is involved. When I am talking to you, you are putting questions to me, I am answering to you. When interaction is there, clarify the concept and maximum interaction will be there. Up till two phases of education technology. Audiovisual phase, you are using teaching, not much interaction was there. You can see it and that. In other one, like audio program, audio is now people are listening. They cannot stop the audio cassette. Please stop it. I want to put a question. No, not at all. But in the third phase, to enhance communication means interaction. That's why very important. You can stop anytime, you can put a question, you communicate, and you can enhance the interaction. For this, the third phase, which is the latest one, information and communication technology. Communication word indicate interactive aspect, which will help to the quality education. Therefore, after giving the background of the various development of various phases of education technology, the recent trends is the information communication technology because word communication means the interaction is there. And what are nowadays going on? Email, fax, audio conferencing, video conferencing, computer conferencing, satellite communication, mobile technology, internet, online, and I will tell you EduSet. I start with EduSet. Are you aware that? But I tell you, I am proud to be Indian. When I go outside the country, I mention in that country I am proud to be Indian. Why, sir? Why you do proud? Because India is the only country in the world. This country has dedicated full satellite for education purpose. Other countries, USA, anyone, they use satellite for spying purposes. उसका पता करना कहाँ डिफेंस का है क्या कुछ है. But India is the only country, we say the developing country, but contributed and spent a lot amount on a satellite which is exclusively for the education purpose. And what is the name of that satellite? Satellite which is there, and India has already launched long back, is for education purpose. What is the name of satellite? Name indicate EduSat. EduSat आपने नहीं सुना अभी तक. EduSat is the Indian satellite used for education purpose. IGNO is the nodal agency, and as a director, I was the nodal officer there. We are using EduSat for education purpose, not for education purpose like B.Ed, M.Ed, for medical colleges also, IIT college also, management also. Various type of programs through satellites are communicating. We call it satellite conferencing also, satellite. So this is the latest one. So what is more important, the third phase, the important thing was the distance barrier should be avoided. Second, presence of teachers should not be felt to large extent. Third, the interaction should be ensured. For that, all these things comes. Our time, when I am talking of the 80s, आपका तो कहीं birth भी नहीं हुआ होगा, जन्म भी नहीं हुआ. 80s when I got a assignment to teach in one of the UK university, city of Bath. I tell you very interesting thing. वहाँ पे क्या था, एक कोई लेटर आता था ना हमारे यहाँ से दिल्ली से, तो हमारे एक और साइंटिस्ट साथी भी थे. He used to read, वतन से खत आया है, वतन से चिट्ठी आई है, गाना था ना, वो एक बार गाना चल गया तो सारे इंडियंस बेचारे रोने लग गए, क्योंकि उस समय क्या था, चिट्ठी आने में 1 महीना लगता था. कौन क्या पता लगता है बाद में, अरे ये चीज हो चुकी, बताइए अब तो क्या करें. But now then the email was there, we can immediately respond,
respond easily, immediately. So time was saved, information barriers were avoided, so email, fax, but still the real input was not provided through these email and fax. Then we come to the audio conferencing, audio. We have, we still have a audio conferencing Vigno. Why? Because our students are at a distance and they are busy in various things. For example, I got a message when I was director there. One of my BEd students, sir, I am a student of a BEd, but today I am helping my father in farming. But I can listen to your lecture, I learn a lot. Through All India Radio से audio conferencing कर रहे थे. They can stop me and put a question. Then start audio conferencing. But still audio has only one sound. And to make it more attractive, to give maximum information, to make it interactive, to avoid distance barrier, then comes the video conferencing, teleconferencing. आप देख रहे होगे video conferencing going on. I mean, everybody can use through phones also video conferencing. Computer conferencing, I need not to elaborate because it's again very important thing, the latest one. So many our meetings at various countries are going through teleconferencing, this computer conferencing. What is more important, sometimes as it happened, कई fail हो, total failure हो जाता है in net, etc. Then what is more important, which India has the capability, we have the satellite. Through satellite, we can go for satellite conferencing, satellite communication, and we have teleconferencing through satellite also. And you won't believe my student who is at the Mauritius or sometimes at the northeast countries also, Middle East countries, they can listen very easily. They can attend a class like this. But only thing is a virtual mode. We cannot ask them to stand up and we want to touch you and give you a what we call as शाबाशी देना चाहता हूँ वो नहीं हो सकता. But all the things are there. So satellite conferencing, teleconferencing, the latest one. Now we know what we are doing. We are teaching our students through telephone, and that is the mobile technology. So through telephone, because all the time the audio conferencing cannot be possible through All India Radio. Mobile technology, all the lessons are there. Sometimes what happens, we give a simply disk. Now we avoided the disk also, simply drive. And our learning material is not available in terms of the hard copies. Only that. Do it thoroughly and then interact with us also. So the latest phase of the information technology is the email followed by audio conferencing, video conferencing, computer conferencing, satellite communication, teleconferencing. Now the mobile through telephone, mobile technology is there, and internet, of course, a part of that. And I can tell you the last one, the EduSet is a very important one. What is happening in EduSet is ready to accept our program 24 hours. But friends, I tell you the reality. We ignore all the universities of education, Medical Council of India, all the medical colleges, medical universities, IITs, etc. We all together have program only for 4 hours to feed that bird, satellite. We keep on repeating. Why? Because we have in advance as far as the hardware is concerned, technology in education. But we are lagging behind technology of education. Technology of education comes from you people who are experts. Suppose you have written a script, that script having a nice chart, visuals, models, and then you can demonstrate very nicely. That script is required. That is software aspect. In India, we are lagging behind. So for a quality education, especially at the global level, I request you all that go above that. And I may put a point in the academic council of IP University that why do you all the time force students for MOOC programs? Because MOOC has become almost a compulsory according to UGC. Why don't the College of Education should be asked to develop their own MOOC programs? They should develop it. And when you develop, you are the real practitioner. You will come out with the quality also. So my only request to bring quality in education through education technology, that you should be able to prepare a quality software. The scripting is very important. When I was in Central Institute of Education Technology as the head of the department controller for development of program, we gave a training 1 month, 2 months to all teacher educators how to write a script
for audio program, video program, computer learning, and finally for our conferencing, all these things also. Especially during Corona time, online education was there. So the ministry asked us on the request of the PSC through NCERT, I was asked to go ahead with a research whether the online education is effective. Friends, you won't believe and carry out a research. 99% online. What was the reason? Because through online, they wrote online. But and how the content is to be taught. Is there. It is only disseminate your ideas, how you present will make it up to everybody. For example, you are a good teacher, college teacher of a quality one, who has a good available through technology at college. So through teleconference and video conferencing, we are always trying to make good teachers available to. It's for the dissemination purpose. What is more important, creativity, innovative, quality aspect is with the teacher. So teacher has to develop software. Scripting is very, very important. Then we have started training how to go ahead online education, how to deliver action through online education. It is there and no problem. There is the quality lesson planning is there, scripting is there. Then the only technology can disseminate. So they can make you available short time at a very long distance. But what is more important, how are you to develop the lesson script also? Now the basic questions which are very important for dealing with this, that what are the essential aspects we must keep in mind. चल नहीं रहा है. Yes, it's stopped. Now, whenever we go for technology, education technology, we must keep certain principle in mind. And therefore, what are those principal criteria for selection of IT? One is the availability, accessibility, acceptability. 3 A's are very important. I can tell you, very good program, everything is there, but your computer is available, and when computer is there, so net problem is there, accessibility is not there. And third, which is important thing, which we are really concerned as educationists, that we carry out a research study by various scholars, that the acceptability. When people generally in our age group also, because we already, myself has already been oriented in various countries for technology, but the middle age still, they don't accept the technology also, because their attitude will change. They all their time they are spoiling. I give simple example. The attitude parents also, teachers towards technology. We have a good connection with the university vice brother also. So हमारे सर मेरे बच्चे 12th के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे टेक्निकल की तरह ही है. बच्चे को एडमिशन करा दिया. आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी का करा दिया तो ठीक है. फर्स्ट सेकंड आके बोले हमारी ट्रेडिशन होती मिठाई का डब्बा, हमने भी धन्यवाद दिया उनको. उसके बाद क्या हुआ, 4-5 दिन बाद वो आई लेट कि सर मैं आपको एडमिशन कर, अब क्या हो गया, कैंसिल करा दी. अरे टू कैंसिल, इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चा कि सर वो रात के 12 बजे कंप्यूटर. हाँ, मैंने देखा उसमें लड़कियों की बड़ी फोटो है थी. अरे क्या फोटो थी तो ये तो गड़बड़ हो रहा है. तो आप तो ये करा दिए, मैं BA MA कराऊंगी, मेरे एक ही तो बच्चा है. बिकॉज द एटीट्यूड टुवर्ड टेक्नोलॉजी कि ये ऐसी चीजें आ रही, नेगेटिव एस्पेक्ट. मैं कहा कोई बात नहीं, विल थिंक ऑन. पता था कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट है. नेक्स्ट डे आई कॉल दैट बॉय, अंकल मेरी मम्मी आई होगी, अब मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ, मुझे ऐसा असाइनमेंट दिया गया. तो वेबसाइट की जो एक्सेसिबिलिटी थी रात के 12 बजे होती है. अब किस्मत मेरी
जब मैंने खोला और मम्मी ने देखा तो लड़कियों इसमें, so their attitude is different. So accept terms of as when any it is there, if any actor, some other advertisement will not many lessons. Basic तो वही है. तो one of the professor of US was teaching entropy. अगर कोई science के तो जानते हैं entropy के ऊपर climate change and all these things are there. तो how the entropy is affected. उस lecture कर रहे थे उन्होंने lecture आप सभी आए because USA professor is talking. Accept कर मैंने भी देखा. I search out my book of Finar Wordsworth. The concept provided by the professor of USA was something wrong. So I decided that this information is given to so many millions of students all over the world will affect that because it's a negative aspect of technology. So I sent a mail, sir, I'm a because in that you should be very cautious. Right? तो आपके ऊपर sure होगा. अगर वो गलत भी नहीं है ना, गलत है तो आके लड़ना पड़ेगा. हम तो इतने टीचर वाले नहीं जो केस लड़ने. तो आपका आराम से लिखा कि आई एम स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री सर, आई लर्न about entropy, but what you are sharing is something different. Is it correct or wrong? Please clarify. आप मानेंगे नहीं. Look at the attitude of that professor. Immediately send an email. प्रोफेसर शर्मा, वो देख लिया उसने, ये स्टूडेंट ये कह रहा है, उसमें मेल गई तो प्रोफेसर शर्मा लिखा हुआ. प्रोफेसर शर्मा, आई एम सॉरी, करेक्ट इमीडिएटली आई करेक्टेड. आई एम सॉरी, आई एम प्रोफेसर दिस एंड दैट थिंग, वो सारा लिख के भेज. It was a positive attitude because teacher जो बता रहे थे, everybody accepting that definition, but I told no, that's there, they accepted it. A teacher can always say I am sorry and this is the correction can be carried out. So उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे अच्छी लगी, I got $2,000 चेक आ गया वहां पे. That was a good one for me. So what I want to tell you, as a teacher, you are very curious and delivering your lecture through using these type of media. I will say these are media type, teleconferencing, computer conferencing, audio, video. People will have the third aspect, the acceptability will be 100% ensured. So availability, Government of India is going ahead with that. That should be available to everyone. And now so many hardwares are there. Latest accessibility is also ensured. We have to change the mindset. This is only possible when we have good script, good software is there. Then we can add quality, economics, and finally, what is more important, I gave example of validity of chemistry concept. It should be correct. Validity must be ensured. Then the quality education through education technology can be ensured. Now, what is more important after that, after talking about this thing, ये हैंड अप हो जाता है, कुछ इसमें प्रॉब्लम है. वैसे एक दो पॉइंट है. आ गया. Okay. Now, my question is that when we talk about all these things, I mentioned that these are teleconferencing, video conferencing, audio conferencing, computer conferencing, satellite communication is a dissemination devices vehicle. What we have, we can disseminate it and make it available to all. Now the question is, which it is the most effective using this various type of technology? Multimedia. There is a term, two terms are there. Multiple media and multimedia. So multiple media, separate thing. Audio use कर लिया, थोड़ा video कर लिया, ये कर. Multimedia is integration of that through computer से हम लाते हैं. It involves outside experience, involves your voices, also involves certain pictures, videos, etc. And we are very logically sequenced and provide those things to our student, then the quality of education will definitely enhance. So the latest development using these all technology which I mentioned, that we must and request our teachers, teacher educators, trainee teachers to come forward to prepare multimedia and on this
I think about 3 months back, I proposed in IP University, in academic council, in B.Ed, the multimedia lesson should also be there. I don't know whether they have included or not, multimedia. So multimedia is very important. If you have that multimedia lesson with you, you can easily decide really adding to qualification. So to summarize, not summarize, to conclude, I can tell you all these technology, latest development is a part of education technology, that is the technology in education. What I expect from you that we must try to advance ourselves, make ourselves professionals by developing technology of software in terms of media. Can be giving you the nature of the audience, nature of the nature of the latest development, the quality in education will be ensured because the distance barrier, the individual differences, aspiration level, all thing will be met through multimedia. According to need, learner can have it and it will be independent learning. With these words, I really thank you for your patient listening. Now it's open for question. Open for question answer. कोई भी आप doubt हो वो पूछे आप. I tried to make my presentation very simple, having your background starting from teaching learning aids to information technology to the latest development, the information communication technology. And then set tips were also provided to you how to make it more interactive. So please, any question, any doubt, come forward. I request you for that. पूछो बिल्कुल, without any hesitation. सर जो एक्सेसिबिलिटी का इशू है किसी भी जो हम रिसोर्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई एड बनाया है तो वो एक वीडियो के लिए तक कैसे पहुंचेगा, इसमें काफी टाइम लग जाएगा, तब तक उस चीज का उतना रिलेवेंस ना रहेगा. नहीं, आप बना करके मेरे पास आइए, बिकॉज नहीं मैं बता रहा हूँ नाउ व्हाट इज हैपनिंग, स्पेशली टू इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है EMPC, उसमें आप बात करिए, वो आपका इमीडिएटली, मेरे बीएड स्टूडेंट्स हैं इग्नो के ऑल ओवर द कंट्री, बता रहा हूँ मैं क्या करता हूँ, जो अच्छे बीएड ट्रेनिंग होते हैं, जिन्होंने अच्छा पढ़ाया, उनका लेसन लेके उनकी मैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग कराता हूँ, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड तक पहुँचती है. तो जो भी वो चीज अच्छी बनाती है, इनोवेटिव, इट डिसेमिनेट टू ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो नाउ वॉट एवर यू आर देयर, एक आपने वर्ड टर्म सुना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आया ABC. क्या होता है ABC? यस, यू नो दैट, जो भी आपने अच्छी, इज नॉट कि रिसर्च पेपर ही आप, whatever innovative good practices you are going ahead, you make it available there. एकदम करें इसको, वो उसकी चिंता मत करिए. और ज्यादा ये तो आप मुझे बता दी डॉक्टर ज्योति करके, मैं आपको वहाँ स्टूडियो में बुला लूंगा, वहाँ पे आपको एक लेक्चर रखा जाए. डिसेमिनेशन विल नॉट बी प्रॉब्लम एट ऑल, वो तो नहीं. आजकल तो डिसेमिनेशन क्या है, यूजिंग ए बैड प्रैक्टिस थ्रू, लोग डिसेमिनेट धड़ाधड़ कर रहे हैं. और आपकी अच्छी चीज क्यों नहीं होगा, आप आजकल तो वेबसाइट भी अवेलेबल है, भी अवेलेबल, और उसके बाद अब NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उनको आजकल जो है वो हैपन टू बी आवर स्टूडेंट आल्सो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से गए, वो करेंगे पक्का. हमने कहा इनोवेटिव गुड प्रैक्टिसेस फ्रॉम यंग टीचर्स शुड बी इनवाइटेड. वो तो उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बनाइए, बनाने के बाद बताइए. मेन रीजन कि वी आर नॉट इन पोजीशन टू प्रिपेयर द क्वालिटी सॉफ्टवेयर. If we can have it, no problem. Dissemination will not be a problem at all. और बड़े शांत है, अच्छे ऑडियंस हैं आप तो, प्लीज. जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस होते हैं, लाइक चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, एलजीबीटी, हम उनको यूज कर सकते हैं. Generalized student, I couldn't get it. Marginalized sections होते हैं, children suffering from disability, LGBT, और भी marginalized उनको कैसे बना सकते हैं? वेरी गुड. इसका सॉल्यूशन क्या है? एजुकेशन टेक्नोलॉजी.
what is more important, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, you are more than a doctor, teacher is more than a doctor. You diagnose what are the problems faced by them. मान लो कोई बच्चा है, कोई can't hear it properly, इसको हम क्या कहते हैं, इस पे स्पेशल नीड, और एक प्राइम मिनिस्टर ने टर्म दिया दिव्यांग. आई कैन टेल यू, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, ब्लाइंड प्रोफेसर है. ही वाज माय स्टूडेंट जब मैं वहां पर था. तो जब मैं सीआई में गया और उनसे मैं 15 साल के बाद मिला, मेरी फुट स्टेप को देखे, प्रोफ शर्मा आप आ गए क्या? अरे भाई तुम्हें कैसे दिखा? आई कैन अंडरस्टैंड. तो उनकी सेंसेस दूसरी डेवलप होती है. तो मान लो कोई हियरिंग इम्पेयर्ड है बच्चा कुछ, तो उसको विजुअल्स बनाई. अब टेक्नोलॉजी यू प्रोवाइड सच इंपॉर्टेंट विजुअल्स दैट विल कम्युनिकेट. और जो आजकल तो हमारे पास असिस्टेड टेक्नोलॉजी इतनी होगी, जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल हो रही है. दे कैन लर्न इट वेरी इजीली. हाँ, ये जो का मार्जिनलाइज्ड है उसमें कई डिफरेंसेस है. वन, देयर आईक्यू नहीं है, तो यू हैव टू प्रोवाइड मल्टीपल एक्सपीरियंसेस. मैं आपको बताऊं, it's not a question of marginalized. Everybody have faced this problem. There are 2-3 things which is available or rather present in everybody, including us also. One, learn according to our learning style. Second, we learn to what extent is to be learned according to our aspiration. आप में बीएड के स्टूडेंट हैं, आप बीएड के स्टूडेंट हैं, मान लो एक टीचर पढ़ा रही है, एक स्टूडेंट 90% लाता है, दूसरा 70% लाता है. सपोज देयर आईक्यू इज द सेम. क्यों ला रहा है? बिकॉज एजुकेशनल एस्पिरेशन इज डिफरेंट. कोई कह रहा है नो, आई हैव टू गो एड फॉर एमएड एंड गोइंग फॉर रिसर्च एटसेट्रा, कंसंट्रेट से सुनेगा. कहीं कहेगा ठीक है, घर वालों ने कह दिया बीएड करो, और कह दिया बीएड करके शादी कर देंगे, टीचर बन जाओगे, वो वैसे ही अपने ध्यान से पढ़ेगा, बीएड की डिग्री लेनी. Your aspiration level matters. Simple example, when I was in Delhi University, there is a school of Delhi के ना, Delhi Public School. At that time, 2 schools were there. DPS Mathura Road पे, एक RK Puram, 2 ही था. RK Puram just started, and the result was RK Puram just after 2 years was far better than DPS Mathura Road, जो बहुत बढ़िया स्कूल था, कई सालों से था. Teachers were top level. तो पूछा ये क्यों हो रहा है? Then we carry out a research. And the difference was on the aspiration level. आरके पुरम में जो सर्विस क्लास के बच्चे थे वो सब आ रहे थे. उनके फादर मदर कहते बेटे पढ़ो, ये कहाँ सर्विस मिलेगी. और मथुरा रोड में अच्छा वेंटिलेटेड, मतलब एसी एयर कंडीशन स्कूल था, वो सब बिजनेसमैन के बच्चे थे, विदाउट रिस्पेक्ट फॉर बिजनेसमैन. वो बच्चे कहते क्या पढ़ना है. एक को मैंने पूछा उसमें भी, क्यों नहीं पढ़ रहे आप? सर मैं 8वीं पास हो गया, मेरे फादर तो ज्वेलर है, वो तो 7वीं पास. Aspiration level matters. So just to meet the aspiration level, to meet the individual differences, the technology can play a very important role. So this is very important. Try to diagnose what is their weaknesses, how to resolve, what type of multimedia is to be used according to that. And you make it interactive. Try to find out example illustration which really meet their needs. अभी हमने एक रिसर्च किया कि एक अवार्ड मिलता है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बेस्ट टीचर अवार्ड, एनसीईआरटी देती है ऑल इंडिया. एक राजस्थान के रूरल एरिया के प्राइमरी टीचर को, मैथमेटिक्स टीचर को हमने अवार्ड दिया. क्यों दिया? दैट टीचर मेड द मैथमेटिक्स टीचिंग वेरी इंटरेस्टिंग. ऑल द स्टूडेंट वर वेरी इंटरेस्टेड, और सारी इंपॉर्टेंट चीज थी. ही टॉट इन सच ए वे. So I remember one of the psychologists, you remember, Bruner mentioned that you can teach anything to any student provided you must know how to teach. So he taught the mathematics in such a way that everybody learned it. और 5th class का बच्चा 7th 8th class questions को solve कर रहा था. Why? Use the cultural pedagogy. Being teacher educator use that, but we don't mention तो करते हैं, use नहीं करते. Why? He did it. He just interacted with him. You have been given. How do you realize this cultural specific pedagogy is very useful? सर मैं तो पढ़ा नहीं, बीएड भी नहीं किया, जो होते हैं ना आपके नर्स टीचर्स ट्रेनिंग कराया था, तो मैंने देखा कि बच्चे कोई पोएम सुनाओ तो बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेक्चर दो तो सोना शुरू कर देते हैं, अगर उसको कहानी सुनाओ तो बहुत अच्छी तरह सुनते हैं. अब भी हमारी कल्चर है, अगर हमारे बड़े दादी वगैरह कोई कहानी सुनाए, कोई ऐसे भी सुनेंगे. तो इसलिए हाउ टू मेक
perspective, I try to convert mathematics teaching. वो creativity है उसकी कि मैं lecture नहीं उसको जैसे हमारे कवि दो रामायण में चौपाई कविता होती इस तरह से 2 में 4 कटा ये हो गया अप्लाई किया ये होगा सूत्र बता दिया जैसे वैदिक में everybody learn it very nicely, make it very interesting. To grasp it also, they utilize it, solve the problem. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि we try to give those illustration example which are cultural specific. You don't give example which are कई बार हम ये कहते हैं यहाँ पर हमने अपने टीचर्स को बाहर भेजा था दिल्ली गवर्नमेंट को विच आई डिडंट एग्री यूएसए भेज दो यूके भेज दो आईआईटी में भेज दो फॉर मैनेजमेंट कोर्सेज आई सेड नो आवर एजुकेशन मैनेजमेंट इज एंटायरली डिफरेंट हमारा अलग है तो हमारा तो चाइल्ड इंटरेक्ट कर रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी अलग है मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अलग होगा तो वी हैव टू गिव एग्जांपल व्हिच आर बेस्ड ऑन द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इसलिए हम पहला अगर आपके यहाँ चैप्टर है या पता नहीं हमारे बीएड में तो हमने रखा अंडरस्टैंड योर लर्नर उसमें ऑल दिस थिंग कम्स और फ्रॉम देयर यू कैन diagnose those weaknesses and then finally prepare a multimedia and according to need and requirement and according to the capability the child will really pick up and the problems can be solved. Any more question please? So I must thank you for your patient listening, especially after 12:30. You devoted so much time. Dr. Jyoti का lunch का time से पहले हमें देते हैं just to see the audience, but audience is really need to be appreciated. You all are very attentive audience, and I ensure that your interactivity will really help us. And education technology is all the time thinking to contribute to a quality education, and this will lead finally to the global growth. Very important, and I can expect from you that your contribution will be the maximum, and the whole world will be benefited by your experiences and expertise. Thank you very much. Thank you so much, sir, for such an enlightening session. The detailed explanation of education technology covering its meaning, evolution, including their relevance, application, and types, immensely added to our knowledge. So G20 being the theme of our ongoing faculty development program 2024, it's perfectly fine, sir. This is more important, like having pictures for our memories, for our records. G20 being the theme of our ongoing faculty development program also upholds that information and communication technology is a cornerstone of inclusive growth, driving innovation, connectivity, and opportunities for all the nations in the global economy. As you shared the insights of your research on online teaching, it made us realize the significance of developing quality, creativity, and innovation in our teaching learning strategies. As you drew our attention towards various criteria for selection of education technology, including availability, accessibility, acceptability, and validity, supported with some real life examples, it immensely helped us to comprehend the concept, sir. Your suggestion to include multimedia lesson plans in teaching learning practice has very well incorporated by GGSIPU in the B.Ed curriculum, and it keeps on increasing as well, isn't it, ma'am? With every passing year, the number of multimedia lesson plans that these pupil trainees have to make, it keeps on increasing. So we can definitely understand the indispensability of the multimedia that you were trying to teach us today through your session. So thank you so much, sir, for continuously contributing to the field of education. Thank you so much, sir.
bring yourself immediately to this college and with your expression. And this is all mentorships. And you are still the same and this everything. I mean, passage of time doesn't reflect upon you. Then it's still here. Okay, it's true. एक जो टीचर है वो अभी आप बताइए प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी जैसे आप लोगों से मिलते हैं तो इसको भी That's a this appreciation. Thank you so much. Thank you so much. अच्छा लगा. Thank you so much.